Good evening to everyone who have joined us today for this very special budget presentation organized by Dahisar Sports Foundation, Dahisar CA-CPE Study Circle and Rotary Club of Mumbai Dahisar. मैं बहुत खुश आज आपको 19th ईयर है आज हमारा और 19th बजट प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम करता हूं. लास्ट ईयर मैंने बोला था कि दिस वाज द फर्स्ट वर्चुअल बजट एंड दिस ईयर अगेन आई वेलकम यू टू द सेकंड वर्चुअल बजट ऑफ द presented by this three esteemed organization. Let me quickly welcome the team who's going to present today's budget. Dr. Bharat Vasani from BD Vasani and Company and CA Rajendra Bagade ji. Both my very dear friends and I have been following them since a very long time. Joining them is Dilip Parekh ji. Hi. Rotarian Chetan Joshi from Good evening, everyone. Rotary Club of Mumbai Dahisar. He is the current secretary right now. CA Khyati Vasani from BD Vasani and from Vasani and Company, and my very dear friend CA Manish Vora, who is joining from Dahisar CA-CPE Study Circle. And very soon we will be joined by CA Rima Disha. So again, as I was telling you, तीन एसोसिएशन लास्ट कई सालों से इस बजट मीटिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं और उनको आज मैं बहुत तहे दिल से अपने सभी जन जो आज ज्वाइन हुए हैं फेसबुक और यूट्यूब के जरिए सबको मैं इस बजट मीटिंग में वेलकम करता हूं. और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप आपके बजट रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हो. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन और उसको हम लोग हमारे स्पीकर्स और जो अपनी स्ट्रॉन्ग पैनल है उनके थ्रू वी कैन गेट इट डिस्कस्ड. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर भरत वसानी, who also happens to be the treasurer of Dahisar Sports Foundation, to please tell us about Dahisar Sports Foundation and his association through Dahisar Sports Foundation for the union budget presentation. Dr. Bharat Vasani. Yeah. Hi, good evening, all the speakers of the day. And this is the 19th year consecutive we are conducting all three association, Dahisar Sports Foundation, Dahisar CA Study Circle, and Rotary Club of Mumbai Dahisar. We are very fortunate there. Continuously we are conducting this type of budget speech, and there are many other things also we are organized for the benefit of the taxpayers of the especially Dahisar people. So as far as Dahisar Sports Foundation is concerned, I am just our Dr. Vinod Gosalkar is not available right now because he was busy with the MADA meeting. He is chairman of MADA. So I am just on behalf of Vinod Gosalkar ji, I am talking about the Dahisar Sports. Dahisar Sports के लिए विनोद गोसालकर जी एक ही नाम बेस्ट है कि विनोद गोसालकर एंड Dahisar Sports Foundation is the person कि जिन्होंने Dahisar Sports Foundation को इतना आगे लाए. Dahisar Sports Foundation is now the best association, best sports foundation, जहाँ more than 2,000 children are taking benefit of different type of 17 type of sports of Dahisar. We are very fortunate कि हमारे Dahisar sports के बच्चे हैं, they are playing for their schools, their colleges, they are playing for the Mumbai city, they are playing for the Maharashtra state, and there are some people, children who are playing for the all table tennis, and they are playing for they represent India also. So we are very proud that I am the treasurer of Dahisar Foundation, and Dahisar Foundation is really the icon of Dahisar. So I am very much thankful, Chintan, for giving us an opportunity to talk about the Dahisar Foundation, and thank you very much. Thank you, Dr. Bharat Vasani, for representing Dahisar Sports Foundation, one of the very strong pillars in getting us the budget analysis. And we can right now see people joining on YouTube, commenting. तो आप अगर देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करो, आपके क्वेश्चंस पोस्ट करो, क्योंकि जब आपके कमेंट देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. लेट मी क्विकली वेलकम माय फ्रेंड CA Manish Vora to please come forward and speak about the Dahisar CA-CPE Study Circle and all the everyday things happening with your association.
speakers of the day, and all the dignitaries of the profession, which is a partner in nation building. Over the years, there are various new laws and many changes in the existing laws which are coming. Even yesterday in the budget, Shri Nirmala Sitaraman also mentioned the number of laws which they repealed for which were prevailing so many years. So, as a professional person, we need to regularly learn it, update it, understand it. With that intention, we can say ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है. So with that intention, our study circle came into existence in the year 2001. And with the support of Bharat Bhai, our Gosalkar ji, and the Dahisar Sports Foundation, we are regularly conducting our study circle meeting of all the CAs of Dahisar right from our chess room at DSF. In a month, we are having 2 or 3 meetings. And with the vision of Gosalkar ji, we have also started a reading facility for CA students. And we would be proud that this reading facility is totally air conditioned. And at a time, more than 40 students are taking benefit of these reading facilities. And in last year also, more than 20 students have cleared their CA exams, and they are now chartered accountants. So we are thankful for DSF that they are extending their premises and allowing all these activities, which is totally benefit to the society at large. But yesterday also the budget speech was, I think, of hardly 1 hour and 30 minutes. It was the smallest budget speech. But when we really look at the fine print, budget looks very simple. But when we understood the fine prints, there are many changes which are really very difficult to understand. So today, along with the Dahisar Sport Foundation and Rotary, we are organizing a public meeting, and our speakers will definitely simplify all the budget provisions, which will be understood with all the participants and public today attending to this meeting. So I thank you and I welcome all the people who are connected through YouTube and Facebook channel. Thank you very much. Chintan, over to you. Thank, thank you, Manish bhai. Now let me quickly welcome my friend Rotarian Chetan Joshi, Secretary of Rotary Club of Mumbai Dahisar, to please come forward. And before he joins, I have to say that a lot of my development, my friends' development who are watching this have come because of Rotary, because of the Rotary Family Night. और वहां पे जो हमको पब्लिक स्पीकिंग और वो सब चीजें जब हम देखते थे, सो इफ यू गाइज पीपल हु एंड ऑल्सो आई वांट टू से चेतन भाई, दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दाइसर हु हैव जॉइंड अस टुडे, और उनको हम रोटरी क्लब को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट भी कर सकते हैं. लेट मी क्विकली वेलकम माय ब्रदर चेतन जोशी. थैंक यू Yes, चिंतन. चेतन भाई. थैंक यू चिंतन. और जैसा आपने बताया, काफी टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं रोटरी से, और आज हमारे यूनियन बजट पे हमारा स्पीच है. तो फॉर्मली गुड इवनिंग एवरीवन. I, Rotarian Chetan Joshi, Secretary of Rotary Club Mumbai Dahisar, welcome you all today's annual webinar on budget 2022-23. Last 34 years, our club is doing project in Dahisar, and since here, the club has also worked the various charity project which were out of Dahisar as well. Like जैसे दहिसर में हमारे डायलिसिस सेंटर है सुखसागर हॉस्पिटल में, और हम ज्यादातर प्रोजेक्ट्स दहिसर स्कूल्स में बच्चे जो है जो फीस नहीं भर सकते हैं, उनको मोबाइल से, अभी जैसा वर्चुअल सब हो गया है तो उनको मोबाइल का रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं. काफी स्कूल्स में हमने टॉयलेट ब्लॉक्स वो सब भी बनाए हैं, और यहाँ दहिसर में एज वेल एज हम लोग वाड़ा में भी काफी प्रोजेक्ट्स हम लोग करते रहते हैं रोटरी में, और काफी 34 ईयर्स से हम लोग इससे जुड़े हुए हैं. भरत भाई भी हमारे रोटेरियन है, तो भरत भाई भी ज्यादा जानते हैं ये कि हम लोग काफी साल से हम लोग जिससे समाज की सेवा कर सके और हम हमारे साइड से जो हो सके हम लोग हेल्प करते हैं. Like several such projects, the club has also been very active in organizing several seminars, interview sessions on the various topics. Likewise, every year we have been holding the seminar on budget, enlightening our member about the nation's financial policy. And when it comes to finance, we have an expert with us, Bharat Bhai and Rajendra Bagade ji, the two experts when it comes to the taxes and financial policy. In today's session, Bharat Bhai will help us to understand the direct tax, while Rajendra Bagade ji
we'll talk on the indirect taxation. Without taking much time, I request Bharat bhai and Rajendra ji to take over and help us understand the this year budget, union budget, to how to help us the normal people and us. Thank you so much, sir. Thank you, Chetan bhai. It was a very good presentation about Rotary Club of Mumbai, Dahisar. And if you have any questions, people watching it, आप comment section में डाल सकते हो. And if the question is directed to any of the speakers or any of the associations जो ये present कर रहे हैं, we'll try to address each and every question और आपको हम लोग reach out करेंगे. Let me quickly welcome our today's first speaker, who's going to speak about direct tax, Dr. Bharat Vasani, who has done his PhD in taxation laws. He's a practicing taxation lawyer since 1986. He's an eminent speaker on the subject income tax planning, appeals, search, and surveys. He has been the lecturer at numerous business conventions, conferences, CA study circles, colleges, schools in India and abroad. He is designated by Income Tax Department for training and imparting knowledge to newly promoted income tax officers. जब भी income tax officers नए join करते हैं, तब income tax department ने उनको appoint किया है to train them. He conducts tax awareness sessions for business associates, business associations, schools, and colleges in collaboration with senior income tax and GST officers. And I'm very happy to say from last 19 years, he has been instrumental in bringing this budget session. So for the 19th year, let me quickly welcome Dr. Bharat Vasani. Sir, the stage is all yours. Yes, Chintan, thank you very much for the kind introduction. This is a really, Chintan said, and really I'm starting and I got a comment from my elder brother Bhaskar Bhai Joshi, elder Bharat Bhai. So really, I really found ki I'm taking Bhaskar Bhai, I'm taking your blessings and starting Jai Shri Krishna. And with this, Chintan and my co-speaker, my colleague Rajendra Bagade, we are talking, we are giving speech on the direct tax and indirect tax since last almost 19 years for the benefit of Dahisar. This is a really good platform, and for the benefit of Dahisarites, we have started it. And day by day, बहुत सारे एक्टिविटी हम करते गए. हमारे साथ में दिलीप पारेख जी भी जुड़े. वो भी हमारे एकदम वेटन, एकदम सॉलिड स्पीकर है. एंड ही इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ दी पहले सेल टैक्स में, अभी वैट में, एंड नाउ इन जीएसटी. वो हमारे एनसाइक्लोपीडिया, वो हमारे साथ में जुड़े. तो हम जो 3 त्रिपुटी लोग हैं दहीसर के, so we are doing really miracles for the benefit of the Dahisarite people. Friends, coming to the subject proper, yesterday the budget was announced and started by the speech started by our honorable Nirmala Sitharaman ji, and we started with the Atmanirbhar Bharat and all. And as the Chetan said, the speech was very small and very short and all. But जब भी हम लोग हर साल जब भी स्पीच सुनते हैं एंड तभी देखते हैं यार इनकम टैक्स में तो 4-5-6 चेंजेस है, जीएसटी में शायद कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है. बट व्हेन वी ओपन द बुक्स, ओपन द एक्चुअल बजट स्पीच दिस ईयर आल्सो, द टोटल बजट बुकलेट वाज 284 पेजेस. एंड फ्रेंड्स, आउट ऑफ दैट 284 पेजेस, 89 पेजेस आर टुवर्ड्स द डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल. तो आप सोच सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में कितने अमेंडमेंट्स आए. एंड द डिपार्टमेंट वहां पर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोजल में वहां स्टॉप नहीं हुए. दे हैव अमेंडेड, प्रपोज्ड अमेंडमेंट फॉर द 89 इनकम टैक्स सेक्शंस एंड 15 जीएसटी सेक्शंस दे प्रपोज टू अमेंड. सो दिस इज द बजट. मैं आपको बोर नहीं करूंगा, बट चिंतन जैसा मुझे आपने बोला कि 30-35 मिनट्स 40 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है. वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंप्लीट. कितना टाइम है चिंतन मेरे पास? चिंतन 30 minutes, but if you want to take more, we are okay with it. But it's your decision. You and CA Rajendra Bagade, you guys take the decision. Dilip bhai, you and Rajendra Bagade. एनीवे हमारा तो एक वेटरन स्पीकर भी दिलीप भाई है, तो मुझे वो टाइम देंगे नहीं इतना. एनीवे
very difficult to cover in this 30-35 minutes. Anyway, I'll try to cover as fast as possible. Friends, there is no much changes in the tax rate change. हम लोग कभी कभी हमें पूछते थे, भरत भाई कोई चेंज है टैक्स रेट में? मैं बोला चेंज नहीं है ना, वही आपके लिए अच्छी बात है. कोई ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाया कोविड-19 के बाद, कोई गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाया, वही हमारे लिए खुशी की बात है. बट थिंग्स दैट पीपल शुड नॉट थिंक दैट कि कोई चेंज नहीं है, ये नहीं है. सी इन इंडिया, राजेंद्र, our taxpayers are only 6 crores. Around 6 crore people are paying filing returns out of 135 crores population of the country. That is coming about 4.45% of the total country population are filing that return, their return. So आप सोच सकते हैं कि what is the position of the India. Only the less than 5% people are paying the tax. Anyway, this is the things that day by day in last 4-5 years, it was 2.39%. It is increased in 2014. It was below 2.5%. Now it is coming to around 5%. So anyway, coming to that particular thing, that what are the changes for the slab rate? There is no change. As far as the surcharge part is concerned, they made some changes in the surcharge for the cooperative society. They would reduce that surcharge to 7% for the up to the income of 1 crore and for the 12% for income up to 10 crores. This have changed for the benefit of the agricultural cooperative society and will be at the par of the all corporate sector. So to bring that particular at the par, they have made change in by putting the changes and reducing the surcharge on the income tax payable by the cooperative society. Same with the surcharge is reduced for the association of persons where the companies are the partner. That is consortium and jo hai, that is also that surcharge is reduced to 15%. So that is also good things that surcharge itna zyada tha, and now it was up to around 25% tak jata tha. Now it is reduced to proposed to reduce up to 15%. तो ज्यादा अच्छा है कि that load of surcharge will be reduced to this AOP people also. This consists of the company's partner. Next changes is for the LTCG, long term capital gain on the capital asset. जहां पर surcharge 25% से 37% तक लगता था. Now it is proposed to levy only 15% surcharge on the long term capital gain. This is also good thing. But friends, these all amendments pertaining to surcharge, in my opinion, will be affecting to the high net worth. Barring that cooperative society surcharge, other two amendments, proposed amendment for the surcharge will be applicable to the high net worth people. One more thing, friends. Yesterday, our finance minister was talking about the GST collection. This last January month collection was around 140 crores, 140 lakhs crores of the GST collection, which is the highest collection in the GST regime started from July 17. That is good thing that our collection is rising. GST is rising, even income tax is also raised. 29% of the income tax is also raised from last year to this year. That is also good sign कि 29% आपकी इनकम टैक्स जो है मिलता था गवर्नमेंट को, वो भी राइज हो गया. The reason for that rising of income tax and GST is that especially the sales tax regime, VAT regime, there was people were not paying income tax properly. They were not paying the VAT or sales tax, and in turn the same was affecting to the income tax of the people, and income tax was not getting properly by the department. Now due to the GST regime, I think for that only income tax collection is rising by 29%. Coming to friends, section they amended the section for the revised return. See, sometimes what happens, sometimes the SSC miss out something. मुझे लगता है कि मैंने कोई चीज मिस किया है, और वो मिस करने के बाद मैं अभी क्या करूं. मुझे वो मिस करने के बाद मुझे मेरी कोई इनकम ज्यादा है,
एंड मुझे वो वही पर्टिकुलर इनकम ज्यादा है, तो आई वांट टू फाइल माय रिवाइज रिटर्न। तो प्रोविजन नहीं था रिवाइज रिटर्न फाइल करने का, एंड रिवाइज रिटर्न का प्रोविजन था, पहले 2 साल का था, बाद में 1 साल का था, एंड नाउ आपकी रिड्यूस अप टू 3 महीने का रिड्यूस हो गया था। सो वो जो टाइम गैप जो 3 महीने का था, वो उसमें बहुत लॉस हो रहा था सबको। अभी ये सबको फाइल करना था रिवाइज, या रिवाइज फाइल करके टैक्स भरना था, वो पर्टिकुलर दैट थिंग्स वर सेक्शन वाज नॉट अलाउइंग देम टू फाइल द रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A जो प्रोविजन किया, उसमें दे कैन फाइल द रिवाइज रिटर्न बाय पेइंग द टैक्स। Here one thing is that they can file the tax, they pay the tax also, particular thing, but thing here thing is that they can pay the file the return before 12 months of the filing return। ओरिजिनल रिटर्न सपोज आपने फाइल किया है 2021 में, मार्च 21 में फाइल किया है, तो आपको 12 मंथ्स के अंदर सपोज आप फाइल करते हैं, तो अदर देन टैक्स, नॉर्मल टैक्स, आपका जो नॉर्मल टैक्स था प्लस इंटरेस्ट आपका जो था, वो उसके अलावा यू टू पे 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इनकम यू आर एस्केलेटिंग और फाइलिंग रिवाइज रिटर्न। सब आपकी रिवाइज रिटर्न इनकम थी 2 करोड़ रुपया, एंड यू आर फाइलिंग 50 lakhs मोर इनकम, तो आपको 50 lakhs पे जो टैक्स लगेगा, उसके अलावा 25% एक्स्ट्रा भर के यू कैन गेट रीड ऑफ द थिंग्स ऑफ पेनल्टी, एंड आपका प्रोसिक्यूशन जो थिंग्स है वो सब आपको निकल जाता है। दिस इज इनडायरेक्टली द आईडीएस प्रोविजन। आपने देखा होगा 2016 में जो आईडीएस प्रोविजन आया था, उसमें ऐसा ही था कि 45% आप टैक्स भर दो एडिशनल, एंड यू कैन गेट रीड ऑफ द थिंग्स। So many immunities were available in that particular thing in IDS 2016. This is one thing is better that you can go ahead to the department कि मुझे मेरी इनकम एक्स्ट्रा ऑफर करनी है, and I want to pay the tax and get reading of the all complications. And suppose after 12 months up to 24 months you are filing revising your income, you have to pay 50% other than your tax and interest. You can pay 50% of that particular thing, and you can revise it. There is no consequences of the all penal provisions and all. So this is a good thing that you can pay 25% up to 1 year, pay 50% of the 2 year of the filing original return. This is a good thing, good this is amendment. Many people are thinking that कि मुझे वो सब रिवाइज करना है, मुझे वो करना है, तो that should be there. Only thing here, there are so many bars are available, you cannot file the revise. If your tax liability, आप सोचते मेरी टैक्स लायबिलिटी पहले 5 करोड़ थी और मैं रिवाइज करता हूँ 4.75 करोड़ करता हूँ ओरिजिनल में, तो दैट इज नॉट अलाउड। आपकी जो लायबिलिटी है उसमें टैक्स बढ़ रहा है, इन दैट केस ओनली यू कैन फाइल द रिवाइज रिटर्न, नॉट अदरवाइज। आपका कोई रिफंड है, वो रिफंड कम हो रहा है, तो भी आप रिवाइज नहीं कर सकते। सो देर आर सो मेनी थिंग्स आर बारिंग इज अवेलेबल कि आप फाइल करना है। इफ यू आर फाइलिंग एंड पेइंग मोर टैक्सेस टू गेट रीड ऑफ द पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन पार्ट ऑफ द थिंग्स, यू कैन पे एंड टेक द साइलेंट स्लिप। Same friends, here the new section department is proposed to launch on the that is question of law. सपोज मेरी कोई अपील पेंडिंग है, अभी जो पूरे कंट्री में जो 148 का जो इश्यू चालू है, एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ जहां अवेलेबल है, इन केस ऑफ द रीओपनिंग मेरा क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि मुझे चांस नहीं दिया गया, मेरा ये है, दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ इज देयर पूरे कंट्री में। आप जो अभी 148 का इश्यू चालू है, तो वहां पर कैसा कि 148 में भी ऐसा ही है। आज डिफरेंट कंट्री हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री कि सपोज 5 एप्लीकेशन ओरिजिनल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई है, दूसरे 100 लोग वहां जुड़ गए और उनको साथ में उसका डिसीजन होता है। सेम इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इवन इन बॉम्बे हाई कोर्ट ऑल्सो नेक्स्ट मंथ डेट इज फिक्स्ड। तो यहाँ पर 500 लोग साथ में जुड़ जाते हैं। दैट इज द प्रोविजन ऑफ फाइलिंग एंड क्लबिंग दैट पर्टिकुलर रिट पिटीशन ऑफ द ओरिजिनल पर्सन फाइल्ड। सपोज बॉम्बे में टाटा टेलीसर्विसेज फाइल्ड द रिट पिटीशन against the 148 provision of the old regime before reopening before 31st March 121 and after 31st March 121, जो उसपे सब जुड़ गए वो रिजिम के लिए। दिस इज द बेस्ट प्रोविजन कि यहाँ पर आप साथ में जुड़ सकते हैं
कि मुझे मेरी इनकम को मेरी जो पर्टिकुलर केसेस है उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसमें डिसीजन पेंडिंग है, हाईकोर्ट का डिसीजन पेंडिंग, पर यहाँ पर हाईकोर्ट डिसीजन पेंडिंग, दैट इज जुडिशियल हाईकोर्ट डिसीजन पेंडिंग। बॉम्बे का जो एसएससी है वो बॉम्बे का जुडिशियल हाईकोर्ट पेंडिंग रहेगा तो ही जा सकता है। गुजरात में पेंडिंग रहेगा तो नो, वी कैन नॉट ज्वाइन। ओनली द जुडिशियल हाईकोर्ट डिसीजन पेंडिंग, then only he can join, not otherwise. Of course, yes, in Supreme Court the same question of law matter is pending. The SSC can join by filing one form, and there is some collegium conducted, appointed by the department. Department will appoint the collegium, और वो collegium will take the decision कि मिस्टर वसानी ने एप्लीकेशन किया है, मेरा क्वेश्चन ऑफ लॉ है, बॉम्बे हाईकोर्ट का मैटर पेंडिंग है, आई एम एसएससी ऑफ द बॉम्बे एंड मुझे उसमें इंक्लूड कर दो। तो दैट क्या होता है, जो रिट पिटिशन का वगैरह जो खर्चा है एंड दैट लिटिगेशन का खर्चा है, एसएससी को भी फायदा होता है, एंड डिपार्टमेंट का जो लिटिगेशन है वो भी उसमें बच जाता है। दिस इज अ गुड विन विन सिचुएशन फॉर द डिपार्टमेंट एंड फॉर द टैक्स पेयर्स ऑल्सो। दिस इज अ गुड थिंग, गुड वेलकमिंग अमेंडमेंट proposed by the department under section 158AA. Of course, there are procedure part of that particular thing. I am not going because due to lack of time, I am not going. But we are circulating our PPT. Chintan, you just write off your mail ID. We will mail you, or we'll put in all the groups of Dahisar Sport Foundation, Dahisar CA Study Circle, and Rotary Club for the benefit of the members. सेम फ्रेंड्स, यहाँ पर द पेनल प्रोविजंस, यहाँ आप देखेंगे कि बिजनेस एक्सपेंसेस जो है, यहाँ पर एक प्रोविजन था कि एनी सरचार्ज एंड सेस लेविएबल ऑन द टैक्स। तो जनरली सेक्शन 37(1) में क्या बोलता है कि एनी टैक्स पेड टुवर्ड्स द इनकम इज नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर, बट there are so many high courts have given the judgment that cess and surcharge is not tax. वो टैक्स नहीं है तो हमें अलाउएबल डिडक्शन में उसको डिडक्शन देना चाहिए। There are so many high court allowed the particular thing. Our Nirmala Sitaram ji has put up that particular all the judgments in the budget itself. तो वो wrong था। Department says कि any cess and surcharge is a tax. It is a part of the tax that should not be allowed as a business expenditure under section 37(1). तो डिपार्टमेंट बोले नहीं, वो हम लोग उसको फर्दर में अलाउ नहीं करेंगे, एंड सेक्शन इज प्रपोज टू अमेंड फ्रॉम 1/4/2005। फ्रेंड्स, यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा कि जो भी मैटर्स पेंडिंग है, जिसमें कोई ट्राइब्यूनल मैटर पेंडिंग है, हाईकोर्ट मैटर पेंडिंग है, इसमें ऑब्वियसली ड्यू टू दिस प्रपोज अमेंडमेंट बजट पास होने के बाद वो एक्ट हो जाएगा। तो दैट ऑल द पेनल्टी एंड प्रोविजन जो उसका इंटरेस्ट वगैरह है वो हेवी लायबिलिटी आ सकती है इन अवर ओपिनियन। बट दिस इज अमेंडेड, प्रपोज अमेंडेड रिट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। इन माय ओपिनियन थोड़ा ज्यादा हार्श है, but anyway the act is also like that. Next is friends, amendments in the successor entity and subsequent बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। कभी क्या होता था कि टेक ओवर एंड मर्जर में जो इशू होता था कि सपोज आई एम टेकिंग ओवर द कंपनी ऑफ द राजेंद्र बगाड़े, एंड राजेंद्र बगाड़े की जो लायबिलिटी है, कोई मैटर पेंडिंग है, एंड आई एम टेकिंग ओवर विद दैट पर्टिकुलर पूरा एज इट इज वेर इज आई एम ले रहा हूँ। तो जो उनकी जो पेंडिंग लायबिलिटीज है उसका डिसीजन आने को टाइम लगता था। तो जो प्रॉब्लम होने के बाद जो होता था कि 5 साल के बाद डिसीजन आया, 2 साल के बाद आए, मुझे आई वॉज अलाउड टू फाइल माई रिवाइज रिटर्न, मुझे इनकॉर्पोरेट करना था मर्जर एक्विजिशन में। तो डिपार्टमेंट ने प्रपोज कि उसमें सब्सिक्वेंट जो आपका जो अमेंडमेंट होना है, आपको जो भी टेक ओवर में होता है, वो फ्यूचर में जो आपको सक्सेसर को होना है वो दैट शुड बी इंक्लूडेड नाउ ओनली। तो पर्टिकुलर आपको फ्यूचर अमेंडमेंट है, आपको फ्यूचर को भी लायबिलिटी है, वो आपको आपके अकाउंट में अभी उसको लेके उसको यू कैन work out your exactly take over liability of that particular thing. This is amended, proposed in under one more thing,
there are so many prohibition of the pharma company, travel company. They are giving incentive. They are giving some gifts. They are giving some traveling benefits to the so many people. So they are illegal. That things are illegal. If pharmaceutical company is giving any benefit to the doctors, any traveling company giving to the benefit to the that travel agent. So जो prohibited activity है, pass on that particular thing, benefit of that particular thing, expenditure जो disallowable expenditure है या illegal expenses है, that is proposed कि वो illegal expenses है, that will not be allowed to claim as a business expenditure. Suppose that amendment is that prohibited in India as well as international. जनरली क्या होता है, लोग बोलते हैं इंडिया में नहीं है तो फॉरेन में है, तो या फॉरेन में है इंडिया में नहीं है, तो ये दे यूज्ड टू क्लेम द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसेंटिव गिवन टू द पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज. तो वो अभी वो एक्सपेंसेस डिडक्शन नहीं मिलेगा. एंड दैट्स प्रपोज्ड अमेंडमेंट. इट्स गुड अमेंडमेंट प्रपोज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. दिस इज द वन मोर थिंग, इज द डिसअलाउंस ऑफ द एग्जम्प्ट इनकम. जो इंटरेस्ट था आपका, there are so many litigations were available for the section 14A and rule 8D के exempt income का जो interest है, तो जो था वो actually इसको तो clarification nature में उसको कर दिया कि उस पे future में litigation नहीं हुए. It's a good amendment proposed by the department. This is a deferment of the introduction of various faceless schemes. आप देखेंगे faceless schemes इतना साल से, लास्ट 2 साल से इंट्रोड्यूस किया डिपार्टमेंट ने. वो स्कीम में देर आर सम सनसेट क्लॉज अंडर सेक्शन 92 CA, 144 C, 253 एंड 255 में जो सनसेट क्लॉज थे, वो सनसेट क्लॉज में जो एग्जिस्टिंग लिमिटेशन प्रोविजन थे, वो दैट इज एक्सपायरिंग इन द ईयर ऑफ March 22, दैट इज प्रपोज टू एक्सटेंड up to 31/3/2024. 2 साल और एक्सटेंड कर देंगे वो, because that is sunset clause is really a ambiguity clause. So that is good again that things under that extending 2 years, I think that clarity will come in that particular sections. One thing is the same amendment is proposed in the facility assessment under section 144B. यहाँ पर आपको वीडियो का जो था कॉन्फ्रेंसिंग, हम लोग हर साल देर आर इश्यूज कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं दिया, तो आपका जो ऑर्डर किए दैट शुड बी नो नेक्स्ट ऑर्डर शुड बी कैंसल्ड. ये सब जो देर आर सो मेनी लिटिगेशंस पेंडिंग इन ऑल द, देर आर मेनी हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, और जिसमें डिसअलाउंस भी हुआ, जिसमें ऑर्डर्स भी कैंसिल हुए, नॉन ईस्ट ऑर्डर हो गए. तो ये सब जो इश्यूज हुए, उसके लिए डिपार्टमेंट हैज प्रपोज्ड दैट फेसलेस असेसमेंट 144B पे जो अमेंडमेंट ओमिशन हो गया कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस दिया तो मुझे ऑर्डर ही है, तो दैट इज डिपार्टमेंट सेज नहीं, वो दैट कैन बी डन कि भी वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ तो ठीक है, वो हो सकता है, ओमिशन हो सकता है, उसके लिए आप ऑर्डर नहीं कैंसिल कर सकते. इन माय ओपिनियन ये प्रपोज है जो अमेंडमेंट, दैट विल अफेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस, हमें हो सकता है. So I think this will definitely hurt in the assessment proceeding for the facial assessment under section specifically 144B of the SSC. There are 2 more amendments proposed for the push up for the आत्मनिर्भर जो भी अपना भारत के लिए एक्सटेंशन ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जो था 115 BAB में, वो दैट इज 2023 तक जो था, दैट इज प्रपोज टू अमेंड 1 more year. So same for the extension of the eligible startup जो एक्सपायर हो रहा है 2022 में, दैट इज 1 more year extension given for that particular amendment. So extension of commencement of eligible startup, तो आपको कमेंस करना है तो स्टार्टअप में एलिजिबिलिटी वही है कि सपोज आप 31 मार्च 2022 में स्टार्ट करते हैं, कोई आपको बेनिफिट मिलेगा. तो नाउ ड्यू टू कोविड सपोज कोई स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर पाए तो बेनिफिट जा सकता है उनका, तो दैट इज 1 more एक्सटेंडेड ड्यू टू COVID-19. That is proposed to extended.
good thing. This is for the all startups. One more amendment proposed for the alternative minimum tax, that AMT, for the cooperative society. It is proposed to levy from 18.5% to 15%. At present, it is 18.5% tax is leviable for the cooperative societies, that AMT is leviable, and for the company it is 15%. So bring that particular at par from society to the company. That reduction is proposed by the department. Good welcoming amendment for the especially cooperative societies. Friends, now coming to the very burning issues. लास्ट कल से वो जब से आया एंड लास्ट 3-4 साल से द सेम एम्बिग्यूटी इज गोइंग ऑन फॉर द क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन. यहाँ पर डिपार्टमेंट हैज गिवन यस्टरडे प्रपोज टू टैक्स ऑन द वर्चुअल, दे यूज द वर्ड टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट, that is digital currency. They have amended one section, proposed one section, section 2 subsection 47 block A. वहां पर बोले कि आप कोई भी चीज डिक्लेयर करते हैं, एनीथिंग यू आर डिक्लेयरिंग पर्टिकुलर करेंसी, you have to pay 30% tax of that particular thing, and you can come to the tax that of particular thing. आपको सपोज 1 करोड़ की डिजिटल करेंसी आप ऑफर करते हैं, तो यू टू पे 30% ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड अगेंस्ट दैट आपका जो है उसमें एनी एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड टू क्लेम. आपका जो कॉस्ट है वही आप क्लेम कर सकते हैं. दिस इज द थिंग के आप कोई भी बोलेंगे मुझे क्रिप्टो करेंसी करने में, लेने में, या कोई डिजिटल करेंसी में मुझे इतना एक्सपेंसिस हुआ, मुझे इतना ब्रोकरेज देना पड़ा, मुझे इतनी प्रोफेशनल फीस देनी पड़ी. नो, ओनली ग्रॉस अमाउंट आपको जो भी है उसमें से आपको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपको डिडक्शन मिलेगा, एंड ऑन द नेट अमाउंट यू हैव टू पे 30% टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर डिजिटल करेंसी. डिपार्टमेंट इज यूजिंग द वर्ड डिजिटल करेंसी, नॉट द क्रिप्टो करेंसी, नॉट दी आपका जो हम लोग यूज करते हैं जनरली बिटकॉइन, बट दिस इज नाउ it is called digital currency. One more thing is amended, proposed amended by the department, कि RBI will bring their own digital currency. It is not connected to the income tax, but I am not covering, but that is also proposed by the department. One more thing is also proposed for the digital currency tax. There is no, suppose any digital currency people is offering for the tax, and if you are there making some loss, department says no loss will be carried forward, and no loss will be set up of the particular bitcoin offer tax of 30%. आपको प्लेन टैक्स भरना है, आपको कोई लॉस सेटअप भी नहीं मिलेगा. आपको जो कैरी फॉर्ड लॉस रहेगा, सपोज कोई बोलेगा मुझे मैंने 4 साल पहले बिटकॉइन में ये किया था, मुझे 4 करोड़ का लॉस हुआ, एंड वो लॉस मेरा कैरी फॉर्ड है, और मुझे इस साल का 5 करोड़ इनकेस हमें वो लॉस सेटअप दे और 1 करोड़ पे मैं अभी 30% भर देता हूँ. आंसर इज दो. डिपार्टमेंट सेज आपको नो लॉस कैरी सेट ऑफ, नो लॉस कैरी फॉर्ड विल बी अलाउड अगेंस्ट द सेल ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट, दैट इज डिजिटल करेंसी यू आर ऑफरिंग फॉर द टैक्स. यहां पर कल से क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के, भरत भाई आपको लगता है कि हम 30% भर देंगे, व्हाट डू यू थिंक दैट डिजिटल करेंसी इज आई वेलकम एडवोकेट दीपक ठक्कर. दीपक भाई, वेलकम टू द August gathering today. People are asking me question कि भरत भाई हमने 30% भर दिया तो मेरी डिजिटल करेंसी ऑफिशियल हो गई और मेरी लीगल करेंसी हो गई. One way, directly or indirectly, there are so many issues also on this particular thing, but something everything was dark for the cryptocurrency and Bitcoin. So now some recognition given by the department कि आप 30% भर दो तो टैक्स लायबिलिटी कुछ डिसीजन हुआ. पहले था कि हम लोग वी वर इन डायलेमा कि मुझे क्रिप्टो में कोई सेल किया, कोई पैसा आया तो इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इट इज कैपिटल गेन, इट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. देयर वर सो मेनी डायलेमा एंड कंफ्यूजन अवेलेबल फॉर द पर्टिकुलर सेल ऑफ एंड इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर बिटकॉइन एंड
digital currency, which was not the actually legal currency of the India. इससे ये प्रॉब्लम हो रहा था. But now 30% paying. I was talking to in the afternoon. I was talking to ખ્યાતિ. ખ્યાતિ મને કે ભરત પપ્પા આને 30% ભરીને કાંઈક તો નેટ પર લાવ્યા, એટલે મને લાગે છે થોડું, હું એમ નથી કહેતી કે લીગલ થઈ ગયું, બટ કાંઈક તો રેકગ્નિશન આપ્યું કે 30% ભરીને તમે લાવી શકો. તો લોકો જે ને ટેન્શન હતું એ થોડું નાવ આઈ થિંક they will come to some net of that particular income tax net of that income tax department. One more thing is there will be 1% TDS will be deducted by the payer to the payee. कोई भी मुझे 1 करोड़ का डिजिटल करेंसी बेचता है तो जो भी पेयर है वो 1% उसको TDS काटेगा. तो यहाँ पर the confusion, who is the controlling body of the particular digital currency? In my opinion, it will be the proper, of course there are some many guidelines available expected to amend particular thing, but here some exchange of Bitcoin should be authorized, exchange should be proposed amended by the department होना चाहिए, अदरवाइज उसको कंट्रोल कौन करेगा? जैसा शेयर बाजार में जो है सेबी इज कंट्रोलिंग बॉडी, तो विल बी द कंट्रोलिंग बॉडी. तो इसको कंट्रोलिंग बॉडी करेगा तो कंट्रोलिंग बॉडी विल पे द टैक्स TDS 1%, और द बिकॉज पेयर एंड पेई, सेलर एंड परचेजर आर नॉट नोन टू ईच अदर. उनको डीमेट अकाउंट खोलना है. देयर आर सो मेनी confusions available still, but I hope the department will come out with some clarification or some proposed amendment for the taxation of that particular thing. One more thing, the problem is that I was talking to one chartered accountant yesterday, Jaiprakash Triwari. He is very expert in this particular cryptocurrency taxation and all. So he was talking to me, Bharat bhai, aapko kya lagta hai ki what is the position of the holding? I said, आप कोई भी चीज डिक्लेयर करते हैं, मैं 2 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी दे देता हूँ और 30% टैक्स भर के मैं बोलूंगा मुझे आई डोंट हैव टू प्रूव द होल्डिंग ऑफ द थिंग, पर्टिकुलर थिंग. नो, पर्सन showing the cryptocurrency of any amount, they have to prove the source of the holding of that particular cryptocurrency or any digital currency. If you are paying tax 30% and आप बोलेंगे मेरा सब क्लियर हो गया, नो, आपको होल्डिंग प्रूव करना पड़ेगा. आपने होल्डिंग प्रूव करने के लिए सेक्शन 68 में आपका सोर्स जो है, अभी तो सोर्स का सोर्स भी आई एम कमिंग टू दैट सेक्शन 68, बट यू टू प्रूव हाउ यू आर होल्डिंग, आपका कैसा होल्डिंग है वो आपको प्रूव डेफिनेटली करना पड़ेगा इन माय ओपिनियन. यहाँ पर दूसरा एक इश्यू है कि हाउ टू फाइंड आउट दी, सपोज कोई गिफ्ट करता है, गिफ्ट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56. 56(2) का तो आपका इश्यू है, दैट इज टैक्सेबल. तो उसमें मैं FMV क्या लूं? फेयर मार्केट वैल्यू मेरी क्या आएगी? फेयर मार्केट वैल्यू मेरी इंडियन बिटकॉइन की जो बेस है उसके पर आएगी या इंटरनेशनल में कोई है वो उसके पर आएगी? दैट इज ऑल्सो कंफ्यूजन कि मैं FMU क्या लूं पर्टिकुलर थिंग के लिए. सो दिस इज ऑल्सो कंफ्यूजन. दिलीप भाई एकदम शांति से सोच रहे ये भरत भाई क्या बोल रहे. दिलीप भाई, सो बिटकॉइन आने के बाद, टैक्सेबिलिटी आने के बाद, देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन्स अवेलेबल for the taxability, for the holding, for the TDS. There are so many issues unanswered in yesterday's budget speech. Hope Finance Ministry will take up these all the issues and resolve the things by amending and proposing amendment of particular digital currency, virtual digital currency of the sale or anything, and the amount received against the sale of that particular digital currency. नेक्स्ट इज फ्रेंड चिंतन. में कितना टाइम है मुझे चिंतन? We have 5 more minutes for as per the schedule, but you can take 5 more minutes if you want. We can make it 10 minutes. ठीक है, मुझे गिफ्ट देंगे ना ये लोग, दिलीप भाई और राजेंद्र बगाड़े, GST में थोड़ा गिफ्ट देंगे. यस यस यस, यू आर फ्री टू डू. बिटकॉइन में गिफ्ट दे दो, चलेगा मुझे. टैक्सेबल होगा कि नहीं फिर? बिटकॉइन में तो राजेंद्र, आई वाज टॉकिंग टू वन पर्सन यस्टरडे. सी व्हाट हैपेंड, सपोज द बिटकॉइन कैसा यूज होता है.
of the, and this is off the line I am talking, but thing is that suppose person has to pay some amount to the USA person, they are giving बिटकॉइन यहाँ देते हैं, वहां पर वो बिटकॉइन ट्रांसफर होता है. दिस इज रियली, उसका कोई कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है. तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि बिटकॉइन का कैसा होगा, हाउ इट विल बी द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ दैट थिंग्स. देयर आर सो मेनी इश्यूज, confusion to my mind since I have read that particular yesterday's proposed amendment for that Bitcoin and that currency. Coming to the, there were so many confusion for the COVID people who are getting the benefit or any amount paid by the employer to the COVID, जो भी जिनको कोविड होता था उनको जो पैसे मिलते थे, उसमें वो पैसे पे the confusion was there कि मुझे 56 लगेगा कि नहीं. Now it is proposed clarified कि employer is giving any amount towards the COVID expenses, any there is no provision the ceiling for the amount. Any amount paid by the employer to employee for the COVID benefit, there is no tax on particular thing. उसको 56 पे टैक्स नहीं लगेगा. Of course, और कोई लोगों से आता है, कोई फ्रेंड से आता है, कोई रिलेटिव से आता है, दैट सीलिंग लिमिट इज प्रपोज्ड अप टू 10 lakhs. तो ये गुड, ये लास्ट 2 साल से ये प्रॉब्लम था लोगों का कि सबको कभी कभी होता है कि बहुत सारे समाज में होता था कि ये इश्यू हो गया, कोई कोविड में एक्सपायर हो गया तो उनको, उनके फैमिली को बहुत सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर उसको पैसा दे देते थे. तो वो जो रिसिप्ट होती थी उनकी, वो रिसिप्ट टैक्सेबिलिटी हमें बहुत प्रॉब्लम होता था कि सपोज 10-15 लाख रुपया मिला, 20 लाख रुपया मिला समाज से, तो सेक्शन 56 में टैक्स होता था. देयर वाज नो क्लियरिटी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. फॉर्चुनेटली दिस इज प्रपोज्ड टू क्लैरिफाई सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 and section 56 subsection 210 also for the COVID-19 relief fund. One more thing, Chintan, this is applicable to your construction activity people, for all the builder. It is proposed that TDS on the e-mall property, जब ये any e-mall property is sold by any person, उसमें 1% TDS जो है above 50 lakhs आपका ट्रांजेक्शन होता है, तो दैट 50 lakhs पे आपको 1% टैक्स भरना है. जो भी 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी रहेगा, above 50 lakhs आपको जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन होगा, but you have to pay 1% TDS on that particular from the payment of made to particular person. Here the thing was that the 1% was leviable on the agreement value. Now it is proposed कि आपका जो 1% है has to be paid on the stamp duty valuation. राजेंद्र, यहाँ कंफ्यूजन क्या होगा कि 50C में and 43CA में the 10% difference is allowed. For 43CA up to June there are 20% cap is there कि आपको 20% 43CA में builder is selling the flat to the any, आपको the limit, ceiling limit is 2 crores or something. But thing is that कि suppose वो difference claim करता है, मैं आज 50C में कोई इनकम ऑफर करता हूँ तो मैं 10% का कैप लेके उसको मैं उसका कैपिटल ऑफर करता हूँ, तो वहां पर मेरा टीडीएस ग्रॉस पे कटेगा. सो देयर विल बी सो मच मिसमैच कि टीडीएस का डिडक्शन जो 1% है दैट विल बी ऑन दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन. दीपक भाई, आपको भी ये पर्टिकुलरली एप्लीकेबल है, आप भी ध्यान से सुनिए. 1% विल बी ऑन दी एग्जैक्टली ऑन दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन. सपोज मेरा एग्रीमेंट 5 करोड़ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 7 करोड़ रुपया है, तो मेरी 1% लायबिलिटी अंडर सेक्शन 194 IA विल बी ऑन द 7 करोड़, नॉट ऑन 5 करोड़. तो ये इशू मिसमैच का आ सकता है. ऑफ कोर्स लेट अस सी द व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर थिंग. नेक्स्ट इज अमेंडमेंट, सॉरी next proposed amendment for prorogation for the TCS applicable. TCS was proposed before 2-3 years. वहां पर वो प्रोविजन ऑफ दिस प्रोजुगेशन का प्रपोजल नहीं था. नाउ इट इज सेड डिपार्टमेंट ने कि जैसा टीडीएस पे अमाउंट कलेक्ट करने के बाद नहीं भरा तो प्रोजुगेशन है, वैसा टीसीएस में भी सेम प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल कि आपने टीसीएस कलेक्ट किया नहीं भरा, द प्रोजुगेशन विल बी लॉन्च against the TCS people. One more, the dangerous amendment proposed by the department. Source of the source. Rajendra, Dilip bhai, Deepak bhai,
ख्याति एंड रिमा, ये आप जो सब सुन रहे हैं, यहाँ पर ये 68 सेक्शन है ना, आपको सपोज ये अमेंड हो गया, इतना प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज पहले क्या था, 68 में आपको था देयर आर थ्री थिंग शुड बी प्रूव्ड। द सपोज आप यू आर टेकिंग लोन और गिफ्ट और समथिंग, अंडर सेक्शन 68 आपको तीन चीज थी, आपको उसकी द पर्सन हु आर टेकिंग गिविंग द लोन, उसके आपको आइडेंटिटी प्रूव करनी होती थी, उसकी कैपेसिटी एंड द क्रेडिट वर्दीनेस। आप उसका आईटीआर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट फाइल कर देते थे, तो आपको वहां सोर्स प्रूव हो जाता था अंडर सेक्शन 68। नाउ डिपार्टमेंट, व्हाट डिपार्टमेंट इज प्रपोजिंग कि सपोज आप लोन लेते भरत वसानी से, दीपक भाई ने भरत वसानी से 5 करोड़ का लोन लिया, भरत वसानी का बैंक स्टेटमेंट आप चेक करते, भरत वसानी 5 करोड़ दीपक भाई को बराबर दिया है, पर भरत भाई का सोर्स क्या है? सोर्स का सोर्स भरत भाई ने सपोज जहां से पैसा लिया है उसमें सपोज कोई कैश डिपॉजिट है या कोई द थिंग्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 68, तो ये सोर्स ऑफ द सोर्स है फॉर ऑल द क्रेडिट अमाउंट, द लोन पार्ट इज देयर एज फार एज शेयर कैपिटल इज कंसर्न, so gift is concerned. So source of the source should be proved under section 68. This is very very dangerous amendment, proposed amendment by the department. Of course उन्हें भी बहुत तकलीफ होती है कि हम लोग तो आईटीआर फाइल कर देते, हम लोग तो बोल देते हैं हमारा तो सोर्स प्रूव हो गया, तो 68 में एडिशन नहीं करना चाहिए. There are so many judgments, favorable judgments in our since last so many years. One more proposed amendment is for the declaration. जब भी आपका सर्च या सर्वे होता है, यू आर डिक्लेयरिंग कैश और स्टॉक, सपोज आपने कैश और स्टॉक सर्वे या सर्च में डिक्लेयर किया 10 करोड़ रुपया, तो आपकी उस साल की इनकम होती है. तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आई एम डिक्लेयरिंग 10 करोड़ टुवर्ड्स द कैश और स्टॉक फाउंड अंडर दैट 132 और 133 सर्वे में या सर्च में, तो मेरा अर्लियर लॉस पड़ा होता था, तो मैं उसको सेटअप करता था और डिफरेंस पे मैं टैक्स भरता था. तो दैट वाज नाउ प्रपोज टू अमेंड कि भी ये सब चीज में कोई भी चीज रहेगा उसका अर्लियर लॉस सेटअप नहीं होगा. आपकी जो भी इनकम ऑफर करेंगे अंडर 132 एंड 133A, उसका आपका कोई भी लॉस आपको सेटअप नहीं होगा. देयर आर चिंतन 5 minutes. There are changes in reassessment provisions. 148A जो new assessment provision was brought by the department last year, new regime of the reopening. Of course, there are so many issues in old regime of section 148. I am not going into that particular thing because department has not amended particular section or gone to that particular section. There are so many issues pending of the many high courts of the country. So friends, यहाँ पर 148A it is inserted by the department and passed in Lok Sabha from 1/4/121. वहां पर है कि सपोज आपको रीओपन करता है असेसिंग ऑफिसर, उसको अप्रूवल लेना पड़ता था तो स्पीकिंग ऑर्डर करके उनका हायर अथॉरिटी का. नाउ डिपार्टमेंट सेज कि 148A में नो अप्रूवल रिक्वायर्ड बिफोर नोटिस. सपोज उसको नोटिस इश्यू करने के 148A करने के पहले उसको एसएससी को चार्ज देना पड़ता है, एक्सप्लेन करो, पर उसको अप्रूवल लेना पड़ता था फॉर हायर अथॉरिटी. डिपार्टमेंट सेज कि नहीं भाई, आपने एक्सप्लेन किया, उसके पास पेपर अवेलेबल है, उसको वापस फर्दर अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं, he can directly send the reopening notices. One more is proposed amended. Suppose assessing officer है, उसको reopening करना है अंडर सेक्शन 148A, तो उसका कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन पड़ा है वहां पर, उसका कैग ऑडिट नहीं, रेगुलर ऑडिट ऑब्जेक्शन है आपका. गवर्नमेंट जो असेसमेंट होता है तो ऑडिट भी होता है, उसका कोई ऑब्जेक्शन आता है. तो देयर आर सो मेनी जजमेंट्स कि ऑडिट ऑब्जेक्शन पे आप रीओपन नहीं कर सकते. देयर आर सो मेनी जजमेंट अंडर सेक्शन 148 ऑफ द ओल्ड रिजिम. तो नाउ डिपार्टमेंट सेज कि उसके पास कोई डाटा अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ही कैन डेफिनेटली रीओपन अंडर सेक्शन 148A. सेम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर दी टैक्स ट्रीटीज. कोई फॉरेन कंट्री से टैक्स ट्रीटी होती है, भास्कर भाई आपके लिए फॉरेन, आपके तो अभी आपके ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं, आप तो अभी सिटीजन हो गए, बट यू आर फाइलिंग रिटर्न इन इंडिया, तो टैक्स ट्रीटी जो है वहां पर यूएसए में आप टैक्स भरते हैं एंड इंडिया में आपको उसका डिडक्शन मिलता है. बट सम इंफॉर्मेशन की जब
on that particular thing, you are under the tax treaty, you are not paying tax or something. तो वो जो any information available from the tax treaty people of the particular country, उसको information मिलती है, वो base पर department can reopen the things. He don't have to take the permission from the higher authority. He can directly reopen by taking the particular exchange information from the tax treaty people. One more thing, the scheme of faceless collection information. जैसा भी उनका है, कोई भी collection information कोई आती है कहाँ से भी, तो भी वो you can reopen the things under section 148A. Information required for the pursuit of the order of the tribunal or court. कोई भी ट्राइब्यूनल और कोर्ट से कोई वहां से इंफॉर्मेशन आती है या कोई भी इंफॉर्मेशन है उनकी परस्यूएंट की, वो भी रीओपन कर सकता है. यहाँ पर देयर आर टू थिंग्स के 148A में देयर आर टू थिंग्स. Reopen can be done for 3 years if the income is less than 50 lakhs, Rajendra. But if your income is more than 50 lakhs, the department can reopen your case for next 10 years. And that is the wording is it 10 assessment year. So we are always counting 10 plus 1, that is 11 years. After 11 years, department can reopen the things if your income is more than 50 lakhs. आपका सब्सिडी कोई भी आपका कोई इंफॉर्मेशन है, कोई भी है एंड आपको सर्च हुआ जो भी उसमें जो भी आपका इंफॉर्मेशन है या कोई वहां से आपको ये मिल गया है, तो उसका 50 लाख के ऊपर रहेगा तो डिपार्टमेंट कैन रीओपन अप टू 10 years दैट असेसमेंट ईयर. यहाँ पर भी सेम चीज है कि एनी एक्सपेंडिचर रिलेशन ट्रांजेक्शन कुछ मिला डिपार्टमेंट को कि कोई आपने शादी में खर्चा किया है एंड आपका जो ये है आपका कैटरर के ऊपर रेड हो गई या वहां से कोई इंफॉर्मेशन मिल गई, वहां से कोई बिल मिल गए, भरत वसानी ने फंक्शन किया था उसका 5 करोड़ का खर्चा है, भरत वसानी ऑफर्ड ओनली 50 लाख, तो 4.5 करोड़ रुपया जो है उसका सेक्शन 69A में आपका एक्सपेंडिचर में ऐड हो सकता है. तो ये सब चीज में डिपार्टमेंट कैन रीओपन द केस. ऑल्सो वन मोर थिंग इज प्रपोज्ड अमेंडेड दैट एनी एंट्री इज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सपोज कहां पर रेड होती है और वहां पर आपकी एंट्री फाउंड हुई और वो जो एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, तो वो एंट्री के बेस के ऊपर डिपार्टमेंट को कैन रीओपन द केस. इफ इट इज मोर देन 50 lakhs, they can department can reopen the things on the basis of entry found on the books of account of the particular SSE of the information from that particular investigation or any other department. They can be reopened up to 10 years. There are so many controversy also on this particular thing. Anyway, let us hope that some clarification will come on that particular thing. But as on today's, the department is proposing some amendments and clarifying so many things to avoid the litigations. I think Chintan, I covered many things which is applicable to our this August gathering. Any question we will definitely there to answer. Rima is there. CA Rima Disha, Khyati is there to answer the direct taxes queries. Thank you very much for the patient hearing, friends. Thank you, Dr. Bharat Vasani. Of course, it's a very बहुत long उनका explanation है. He requires a lot of time क्योंकि detail में he always present, but because of the time constraint and very well explained, a lot of people have commented, and we will try to take all the questions in the later part. Now, let me quickly introduce my very dear friend CA Rajendra Bagade, who has promised me कि वो मुझे कपिल देव से मिलाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत recently उनकी कंपनी ने they did a golf event with Kapil Dev, and it was in Delhi, so I didn't get a chance to visit, but I'm sure he has promised me और वो मुझे पक्का बहुत जल्द मिलाने वाले हैं. CA Rajendra Bagade, again he comes from where we all come from, Dahisar, and he has gone to the greater heights. So Rajendra bhai, people like you, people like dad, we all, the younger generation, will all look up to you and we try to follow your footsteps. He's a practicing chartered accountant from 1998. He's senior partner at SARC and Associates, which is one of the chartered accountancy firm having 18 partners pan-India and presence and head office in New Delhi. He's director in SARC Associates Private Limited, a management consultancy company and one of the leading professional services organization having overseas offices. His background and experience: he has a background in the area of
practicing tax, which includes statutory audit, tax audit, VAT, GST, income tax, and has handled appeals up to tribunal level. He has experience in statutory audits of nationalized banks, insurance companies, including many in the central statutory audit of Indian Overseas Bank and SBI General Insurance Company Limited. His background and experience, he has a huge experience in oil and gas companies. Uh, he special audits in the case of exploration blocks of leading oil and gas allotted by the Director of General of Hydrocarbon and Petroleum Ministry. Handle assignments for conducting component audit of overseas group companies, Indian operations of the consolidation of accounts in accordance with international financial reporting standards. He has been a deputy, he's currently the deputy convener of the ISER CA study circle. He has given presentation in various public meetings, and with this particular budget meeting, I remember he has been associate from ever. So let me quickly welcome my dear friend CA Rajendra Bagade. Sir, the stage is all yours. Thank you, Chintan, for the kind words. As always, you have been the great anchor to us, and whenever you present us, like you shower with very kind words. So I'm always thankful to you. Thank you, Bharat Bhai, for a very detailed analysis of the yesterday's budget. Many of us couldn't make out from the news that it's been coming and the newspaper that we have been reading. But then Bharat Bhai has simplified most of the things for us. So I would like to walk on his footstep and जितना हो सके मेरे से मैं कोशिश करूंगा कि सिंप्लीफाई करूंगा. जैसे सजेशन दिया गया था चिंतन की तरफ से कि we should speak in our national language. So I'll try to speak myself, which is difficult actually, but I'll try. But I'll just start with this GST amendment, and thereafter I'll be taking some of the custom tax amendments as well. और मैं कोशिश करूंगा कि ये कम से कम समय में कंप्लीट करूं, सो दैट हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ले सके. और एमिनेंट पैनलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है हमारे लिए. So I think every one of us can take benefit of that. So now I'll start with the Gst Proposals, amendment to section 16. As everybody knows, there is a GST Council. So GST Council अपना almost every month they hold a meeting. और यहाँ पे बहुत सारे changes जो होते हैं वो GST Council के थ्रू होते हैं, ना कि बजट के या फिर डिसीजन होते हैं जिसको बजट में इनको होता है. तो बहुत सेक्शन में जो किए गए हैं इस साल के बजट में, these are relating to GST Council decisions only. So one by one we'll take it up. तो हमें पता चलेगा कि ये क्यों आया, और most of the decisions have been like known to you. तो सबसे पहला है जैसे मेजर जो चेंज हुआ है GST रेजिम में, that is input tax credit availment. जैसे आपको पता था पहले से हम लोग GSTR 1 और 3B फाइल कर रहे हैं फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ GST. वन दैट वी हैव बीन फाइलिंग. और सप्लायर जैसे ही फाइल करता है तो रिसीवर जो टैक्स पेयर है, डीलर है, उसके ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट टू बी आता है. अभी तक ऐसा था कि वो प्रोविजनल बेसिस पे सब लोग जीएसटी लेते थे. तो इस साल अमेंडमेंट आ गया. इसके पहले ही जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड कर लिया कि जनवरी ऑनवर्ड जो जीएसटीआर 2B में होगा वही इतना ही इनपुट टैक्स रेट आप जीएसटी के लायबिलिटी के सामने एडजस्ट कर सकते हैं. तो ये रिस्ट्रिक्शन आ गया है. तो कॉन्सिक्वेंट अमेंडमेंट आ गया सेक्शन 16 में. दूसरा एक मेजर अमेंडमेंट इसमें आया है जो एक वेलकम चेंज है. जैसे कि आपको पता है अगर हमारा कुछ आईटीसी हम लोग मंथली अगर नहीं लेते हैं अपने लायबिलिटी डिस्चार्ज करते वक्त, तो हम लोग को टाइम लिमिट मिलता है 6 महीना, दैट इज अप टू 30th सितंबर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो 6 मंथ का जो टाइम लिमिट था वो एक्सटेंड करके अभी 8 महीना हो गया, यानी 38 डेज ऑफ नवंबर तक हम लोग इसका क्रेडिट ले सकते हैं. पहले ऐसे था, पहले के 4, दिस इज द 5th ईयर, तो पहले 4 साल हम लोग ने 30 सितंबर तक जितना आईटीसी एडिशनल ले सकते थे हमने
कोशिश की, बट वो सितंबर का जो रिटर्न जाता था यानी 20 अक्टूबर जो ड्यू डेट होता था तब तक मिलता था। अभी ये 30 नवंबर का डेट प्रपोज किया है इस साल के अमेंडमेंट में, तो मेरे हिसाब से करीब 40 दिन आपको एडिशनल मिल जाते हैं। तो ये एक वेलकम चेंज है, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। और माइंड यू दिस ऑल की अमेंडमेंट दैट आई एम रीडिंग आउट, ये सबका नोटिफिकेशन डेट आएगा, यानी एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके हिसाब से नोटिफाई किया जाएगा। कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं कि जिनकी नोटिफिकेशन आएंगी सेपरेटली, कि कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जिसका बजट एनेक्टमेंट जैसे हो जाता है, बजट पास हो जाता है, उसके बाद एप्लीकेबल हो जाएगी। So I'm reading one by one. Now the next amendment is in relation to cancellation, section 29, cancellation of GST registration. GST registration अगर आपको पता है कि अगर हम लोग 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरते हैं तो सो मोटो देयर कुड बी कैंसलेशन ऑर्डर कैन कम। पहले तो नोटिस आता है, उसके बाद कैंसलेशन हो जाता है आपके रजिस्ट्रेशन का। कंपोजिट डीलर के केस में अभी नया एक चेंज आया है कि जिसमें इफ यू आर नॉट फाइल्ड द रिटर्न बियॉन्ड 3 मंथ्स का ही उनको टाइम लिमिट दिया गया। जैसे कंपोजिशन डीलर को तो ऐसे भी छूट है कि एवरी क्वार्टर रिटर्न फाइल करें, तो उनके लिए 3 महीने के बाद ही सो मोटो कैंसलेशन हो सकता है रजिस्ट्रेशन का, अगर वो फाइल नहीं करते। बट अदर रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर, एक कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ जो पहले था अभी वो प्रिस्क्राइब करेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा देन विल कम टू नो कि जीएसटी रिटर्न में अगर डिफॉल्ट है तो आपका कितने महीने में वो कंसिडर करेंगे और उसके बाद आपका कैंसलेशन होगा। तो ये सभी लोगों को ध्यान रखना है कि टाइमली आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज योर रजिस्ट्रेशन विल बी एट स्टेक। और एक वेलकम चेंज है, लाइक आईटीसी क्रेडिट हम लोग 30 नवंबर तक ले सकते हैं, वैसे ही क्रेडिट नोट का बेनिफिट भी 30 नवंबर तक ले सकते हैं। जैसे आपको पता है इवन इन मैट रेजिम 6 मंथ्स ही अलाउड था कि क्रेडिट नोट लेने के लिए, तो 6 मंथ्स का अभी टाइम लिमिट 8 महीना कर दिया। तो अप टू 30 नवंबर ऑन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द क्रेडिट नोट रिलेट्स टू पर्टेन्स टू वी कैन टेक क्रेडिट ऑफ इट। देन देर आर सम चेंजेस, जैसे मैंने पहले बताया की अमेंडमेंट्स सेक्शन 37, सेक्शन 38, सेक्शन 39 ये रिटर्न रिलेटेड है। जैसे 37 फॉर फर्निशिंग ऑफ आउटवर्ड डिटेल्स, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आउटवर्ड डिटेल्स की लायबिलिटी हमें डिस्क्लोज करनी है, बट GSTR1 is the return that we file for disclosing our liability. Now section 37 is getting amended for there are some यानी कुछ conditions prescribed किए for furnishing of outward supply and communication of details of such outward supplies to the recipient. यानी अभी क्या हो रहा है कि पहले टू वे कम्युनिकेशन होता था। टू वे कम्युनिकेशन कैसे होता था, जैसे आपने रिटर्न फाइल किया GSTR1, सामने वाला उसका वेरीफाई करता था और GSTR2A उसके पास होता था जो कि एक डायनामिक स्टेटमेंट होता था कि हमेशा चेंज होते रहता था। GSTR2B जब से आ गया है तो इट इज लाइक अ स्टैटिक स्टेटमेंट, यानी आपका GSTR2B में जो आ गया उतना ही आपको लेना है एज अ क्रेडिट, आईटीसी क्रेडिट। तो आगे जाके ये होगा कि आपको लायबिलिटी जब भी आप डिस्क्लोज करेंगे उसके सामने 2B के स्टेटमेंट जितना क्रेडिट है उतना ही लेना है। तो आउटवर्ड लायबिलिटी एक आपको प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप आउटवर्ड लायबिलिटी यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स सेलर है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करता है और उसके ऊपर जीएसटी डिस्क्लोज नहीं करता है, सामने वाला क्रेडिट नहीं ले पाएगा। तो ये अमेंडमेंट हो गया सेक्शन 37 में। आउटवर्ड सप्लाई में अगर तुम्हारा कुछ रह जाता है या कुछ एरर रहता है तो उसका हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं GSTR1 में, बट उसका पहले टाइम लिमिट 30 सितंबर था, अभी वो 30 नवंबर। वो भी एक वेलकम चेंज है कि हम लोग कर सकते हैं 30 नवंबर तक। इसमें और एक चेंज आया है, इफ द taxpayer has not furnished GSTR1 for the previous tax period, then GSTR1 for the current tax period cannot be filed. In the sense, जैसे अगर हम लोग दिसंबर का अगर नहीं फाइल करते तो पहले ऐसा था कि सिस्टम अपने को अलाउ करता था कि जनवरी का आप फाइल करें, एक गैप 1 महीने का या 2 महीने का रह जाए, बट नाउ इट विल नॉट बी अलाउड, इट हैज टू बी ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। तो ये अमेंडमेंट है सेक्शन 37। सेक्शन 38 में फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, जैसे आउटवर्ड सप्लाई का हुआ वैसे इनवर्ड सप्लाई। अभी ये सेक्शन का हेडिंग ही चेंज कर दिया है, हेडिंग हो गया है अभी फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज की जगह पे कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट।
तो जैसे मैंने बताया ऑटो जनरेटेड टू बी स्टेटमेंट, वो उसके बेसिस पे ही आईटीसी क्रेडिट कैन बी अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट। यानी जो ऑटो जनरेटेड टू बी है, इट विल बिकम अ मेन डॉक्यूमेंट फॉर द टैक्स ऑफिसर्स ऑल्सो टू रिलाई ऑन द आईटीसी अलाउ। तो आपको ये पता होगा, यानी दिस चेंज वाज गोइंग ऑन अर्लियर, इट वाज प्रोविजनली अलाउड। यानी आप जो चाहे, यानी जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी आप परचेस करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग आईटीसी क्लेम कर लेते थे। बाद में ये चेंज हुआ कि 20% तक आप अलाउ करते हैं। यानी अगर आपका 100 रुपया है 2A में, तो आप 120 रुपये तक कर सकते हैं। बाद में ये जाके रिड्यूस हो गया 10% तक, 110 रुपये तक कर सकते थे। अभी ये है कि 100% अगर ये 2B में आता है, देन ओनली यू कैन टेक द क्रेडिट। तो दिस इज गोइंग टू बी चेंज फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड, दैट इज जनवरी के रिटर्न में आपको ऑटो जनरेट स्टेटमेंट का ही आईटीसी लेना पड़ेगा। Therefore, अभी ये सप्लायर के ऊपर अपने को यानी जो भी रिसीवर ऑफ जीएसटी है या जीएसटी क्लेम कर रहा है, तो सप्लायर के ऊपर उसको डिपेंड करना पड़ेगा और उसके ऊपर हमने कंट्रोल रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट दी जीएसटी क्रेडिट। देन द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न सेक्शन 39। तो अगेन ये जो फर्निशिंग ऑफ रिटर्न है उसमें कुछ चेंजेस आई है। जैसे मैंने पहले बताया, जीएसटीआर 3B और प्रीवियस टैक्स पीरियड अगर हम लोग ने नहीं फाइल किया और जीएसटीआर 1 करंट टैक्स पीरियड का नहीं फाइल किया है, तो द टैक्स पेयर विल नॉट बी अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 3B ऑफ द करंट टैक्स पीरियड। यानी आपको सिक्वेंशियल बेसिस पे अपना टैक्स रिटर्न मंथ ऑन मंथ बेसिस पे फाइल करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइल द करंट मंथ। थोड़ा और जैसे मैंने बताया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर सकते हैं हम लोग। करीबी का भी टिल 30 नवंबर टाइम दिया हुआ है, तो दिस इज अगेन अ वेलकम चेंज। इन केस ऑफ एनआरआई टैक्सेबल पर्सन, उनका जो टाइम लिमिट पहले रिटर्न फाइलिंग का था 20th ऑफ द मंथ, लाइक आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ 20 तारीख तक उनको अलाउ था। अभी वो उसको 7 दिन से घटा के 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ कर दिया गया। सेक्शन 41 सब्स्टिट्यूट हो गया है। सेक्शन 41 इज द सेम थिंग एज 2B, जैसे मैंने बताया, तो अगेन आई विल नॉट रिपीट इट। सेक्शन 42, 43, 43A ऑफ एक्ट, सीजीएसटी एक्ट हैज बीन ओमिटेड। यानी इसमें पहले जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट था जीएसटी का, आईटीसी का, रिवर्सल इन केस सपोज 6 मंथ में आप पेमेंट नहीं करते तो रिवर्स करना पड़ता था, और फिर जब भी पेमेंट करते हो तो रिक्लेम करने को मिलता था जीएसटी का आईटीसी। अभी वो सब निकल गया, जैसे 2B आ गया है, तो ये एक ड्रास्टिक चेंज हो गया है एंड ऑटो जनरेटेड 2B आपके लिए अभी एप्लीकेबल होगा। सो ऑल दिस सेक्शंस हैव बीन ओमिटेड। सो बेसिकली ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो इनिशियली कॉन्सेप्ट था जीएसटी का, निकाल के ये एक ड्रास्टिक चेंज होके नाउ देयर इज अ न्यू सिस्टम। There is some minor changes in case of other sections. Section 47 levy of late filing fees है, जिसमें TCS रिटर्न भी अगर लेट हो जाते हैं तो TCS रिटर्न आपको पता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए GSTR 8 रिटर्न होते हैं उनके लिए, बट उनको भी अगर लेट होता है तो लेट फी उसको एप्लीकेबल होगी। सेक्शन 49 फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, इसमें जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक, देयर इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, so there are some of the amendments which are going to be prescribed or other it will be notified in due course, जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ अमाउंट पड़ा है तो हम लोग यूटिलाइज करते हैं आवर टैक्स लायबिलिटी टुवर्ड आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो बहुत बार हमारा ज़्यादा होता है क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो उसका हम लोग पूरा यूज़ करके कैश पेमेंट नहीं करते, बट most probably this will end up in the restriction on the availment of the credit or utilization of the credit, and कुछ amount हमें कैश में भरना पड़ेगा। Then there is a change in case of transfer of balance in case of electronic cash ledger। अगर आपके पास कुछ कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है and you are having branches like in another state, normally we don't have, or rather there is one number only in case of one state, even though multiple numbers are allowed now, but then you can transfer it to other listing registration of the same PAN, that means your own company only. So these are the changes
so far there are some changes in case of interest also. Section 50, subsection 3. ये retrospective amendment हुआ है since the day of implementation of GST for July 2017. तो चेंजेस क्या हुआ है कि अगर पहले हम लोग रॉन्गली अवेल कर देते थे, ये कंफ्यूजन रहता था कि जीएसटी आईटीसी हम लोग रॉन्गली अवेल करते थे तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता, इंटरेस्ट लगता था. अभी जाके ये हो गया कि अगर अवेल किया है बट यूटिलाइज नहीं किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा. तो रॉन्ग आईटीसी क्लेम के ऊपर आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा. ओनली इफ इट इज यूटिलाइज टुवर्ड द पेमेंट ऑफ टैक्स. आप आउटपुट लायबिलिटी के सामने एडजस्ट करते हो तो ही उसके ऊपर, और बाद में ये मालूम पड़ता है कि रॉन्ग अवेलमेंट था, रॉन्ग आईटीसी दिया है आपने, तो इंटरेस्ट आएगा. इंटरेस्ट रेट ऑल्सो अंडर सेक्शन 53 it is now prescribed as 18% instead of earlier 24%. So corresponding amendments, ये जैसे CGST का amendment मैंने पढ़ के दिखा है, वैसे UTGST and GST का amendment, IGST का amendment corresponding will be taken place. Now the last part of GST proposal is the refund of tax. There is a new system that they are going to introduce. Again, it is going to be notified for claim of refund in balance in cash ledger. Then पहले जो टाइम लिमिट था 2 साल का, वो अभी बढ़ा के उन्होंने एक उसमें हमेशा कंफ्यूजन होता था. इन केस ऑफ सम ऑफ आवर क्लाइंट्स आल्सो वी फेस दैट प्रॉब्लम दैट की डे जिस डे का आपका लास्ट का ट्रांजैक्शन है उस दिन से 2 साल पकड़े जाते थे. लेकिन इन्होंने अभी ये बोला है कि from the end of that particular quarter, that is, suppose your transaction is till 15 December 2018, then you can claim up to 15 December 2019. So then you could claim up to 14 December 2021. But now it is the quarter, that is 31st December 19. So that means you can claim till date, in the sense we can file the refund today also, because 2 years from the last day of the quarter that we have to consider. Then there are some small changes in case of withholding of the refund by the department. Now they will adjust against the various demand that it is pending. In some cases, it was not allowed to the department. So these are the changes that have been made in case of the GST Act. And as I said earlier, some of them will come into force only when it is going to be notified, and some of them after the enactment of the Act. Now, I'll come to the Customs Act. Only there are a few changes that have been happening. Some of the changes which I would like to tell you is in case of Customs Act overall, there are some advance rulings have been happening, and advance ruling, nobody was knowing what is the validity of advance ruling, how many years. So now they have specified it is going to be for 3 years. 3 years or the change of law or facts in such case. So whichever is earlier. So that time limit they have given. Then there was the Supreme Court judgment in case of DRI officers. As you know, all the customs contraventions or custom related frauds are taken care by the DRI officers. They are the authority who comes into picture. So the Supreme Court said the DRI officers are not the proper officers of customs, and show cause notices issued by them are not the valid notices. So this was the major setback to the customs. So to overcome the said judgment, Supreme Court judgment, amendments have been made in this Act, Customs Act, for validating the actions taken by such officers in the past. अदरवाइज ये सब जितनी भी उन्होंने एक्शन ली थी ARI ने इन कस्टम केसेस में, सब इनवैलिड हो जाती थी. नाउ दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज बीन ओवरटर्न्ड. Then some of the unconditional exemptions have been incorporated in the Customs Act. जैसे आपने पढ़ा होगा कि कुछ चीजों के दाम कम हो गए या बढ़ गए. So this is all the regular practice of in the budget, that in case of customs. कुछ वेलकम चेंजेस भी आए हैं कस्टम्स में, दैट इज अ फुल्ली IT ड्रिवन नेशनल पोर्टल टू बी इम्प्लीमेंटेड. जैसे आपको पता है कि असेसमेंट और अपील के लिए इनकम टैक्स में जो सिस्टम है NES का, NESCA का, और अदरवाइज ऑल्सो गवर्नमेंट इज नाउ getting into big data analysis and
using of artificial intelligence for assessing the assessees. But now custom is also going to have such a national portal of similar kind. So it is again a welcome change. Then there are some exemptions on 350 items are removed to push the government initiative that is Make in India, आत्मनिर्भर भारत. उसके लिए उन्होंने कुछ 350 आइटम्स के एग्जाम्पशन जो थे कस्टम्स के ड्यूटी में वो निकाल दिए, सो दैट देयर इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर मेक इन इंडिया. यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है लोकल मैन्युफैक्चरर उनको एडवांटेज होगा. वैसे ही कस्टम ड्यूटी ऑन सम items which are I am taking of the importance and then considering the MSME businessman that we have as audience. तो यहाँ पे जैसे डायमंड इंडस्ट्री है हमारे दहीसर बोरीवली में और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सूरत एंड गुजरात. So they are having a reason for cheer. कट एंड पॉलिश डायमंड पे 5% की ड्यूटी रखी गई है एंड सॉन डायमंड दैट इज रफ डायमंड के लिए 0% नील कस्टम ड्यूटी रखी गई. So that is again a welcoming thing. In case of some of them, the like anti-dumping duty in case of steel products, it has been revoked. That means now the steel products can be imported, so that यहाँ की जो steel industry है, which is not able to fulfill the demand and there is the increase in the prices in the recent past, so that can be taken care. So that has been removed. Then duty on project import is increased to 7.5%. In case of project import, पहले कंसेशन दिए गए थे बहुत ड्यूटी नील ड्यूटी या जीरो ड्यूटी पे पहले इंपोर्ट हो सकता था. नाउ इट इज इंक्रीज टू 7.5%. देन इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आपने पढ़ा होगा कि मोबाइल चार्जर्स, कैमरा लेंस और मोबाइल कैमरा एंड certain other items like relating to mobile manufacturing. So domestic manufacturing of mobile phones, as you know, it is increasing. There are large scale manufacturing that is happening unlike previous year. That is because of government initiative. So now they are giving further impetus to such production and they are removing or they are giving duty concessions in case of such items. Then the last but not the least, in case of agri sector and MSME sector, they are rationalizing some duties and exemptions are being given for the import and for the agriculture tools or implements manufactured in India. So these are the provisions that I tried to cover in brief. I think I hope I have done justice to whatever time given to me. So I conclude my presentation over here and I am open to question and answer session. Thank you very much. Thank you, CA Rajendra Bagade. You have more than done justice to your time and you have given like every year बहुत डिटेल में आपने समझाया. Now let's get things interesting this time. बहुत सारे questions आए हैं and we have a lot of people who have joined today. So let me quickly welcome दिलीप पारिक जी, जिनको हम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीएसटी के नाम से भी जाने जाते हैं. एंड आई रिमेंबर दिलीप भाई, एक जीएसटी ऑफ कमिश्नर ने डैड को बोला था कि जो आप लोगों ने दहीसर में जीएसटी आया था और आप लोग ने जब एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट दैट मुंबई इवेंट. सो कांग्रेचुलेशंस. लेट्स हियर इट फ्रॉम दिलीप पारेख अबाउट his inputs about the budget and if he has any things to add on. Dilip ji, please, the stage is all yours. Thank you, Chintan. Thank you, Bharat bhai, for giving me this opportunity to share my view with our Dahisars and the budget speech, this webinar. GST के बारे में अगर कहा जाए तो it is 4.5 years old baby and still it is a teething problem is going on, but it will be going to be settled down. और एक खास बताना चाहूंगा, जो ये बार जीएसटी के अंदर काफी, जैसे जनवरी का 1,40,000 जो फिगर दिया था, 986 करोड़ ऑफ रेवेन्यू है. अगर हम लोग पहले का अगर देखेंगे कि एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, सीएसटी, अगर सभी का अगर साथ में करेंगे तो भी इतनी रेवेन्यू नहीं आती थी. तो जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत बड़ी आई है
और उसका ये बार जो बजट के अंदर जो 25% उसने जो 25 ईयर्स ऑफ द पाथ जो उसने बोला, 7th पिलर जो थे हमारे रोड है, एयरपोर्ट से, तो वो सभी को उसको इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करना है, तो उसके लिए फंड्स कहाँ से आएगा? सो नाउ जीएसटी इज अ वेरी गुड रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट टू स्पेंड मोर फॉर द कंट्री एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। और जहां तक यहाँ जीएसटी के बारे में कहा जाता है कि अभी मोर अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, जो कंसीलमेंट था जो पहले प्री जीएसटी एरा में, वो अभी नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ज्यादा करके लोग बिलिंग में बिजनेस कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली नाउ कमिंग गवर्नमेंट ऑल्सो कमिंग वेरी हार्टनिंग विद द ब्लैक शिप। अभी जहां आपको अभी ये समझना जरूरी है कि गुड्स और सर्विसेज मैंने नहीं ली है और मैं खाली एडजस्टमेंट के लिए बिल लेता हूं, तो समझना है उसकी मुझे आज नहीं तो कल पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। और वो सब लोग भुगत रहे। वेट इरा में भी था, उसमें हवाला डीलर था, लेकिन देयर वाज मिसमैचिंग। मैं भी वो 704 के कमेटी में था, तो 1J2 का जो कंसेप्ट था वो बिल टू बिल आ गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीएसटी आ गया। तो अभी जीएसटी इज टेकिंग देयर ओन स्टेप, और ये इंडिया वन नेशन वन टैक्स है। बट नाउ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इवेड ऑल दिस ब्लैक शिप्स फ्रॉम द सिस्टम। तो अभी आपको इतना 1-to-1 जो जीएसटीआर का जैसे आप रिटर्न भरते हैं तो इमीडिएट आपका उधर दिखेगा। अभी ये जो बजट से हमको क्या क्लू लेनी है कि हमको वो देखना है कि जैसे मैंने परचेसेस किया तो मेरा जो सप्लायर है उसने अपना दिखाया, उसने अगर वो दिखा टैक्स भरा है कि नहीं, अभी वो भी एक अमेंडमेंट है। अगर सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा है तो मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो मुझे जब भी टू बी मेरे सामने आता है तो टू बी के साथ बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मेरी परचेसेस है वो मुझे टू बी से वेरीफाई करनी है। अगर मेरी परचेसेस में से कोई भी बिल टू बी में नहीं दिख रहा है तो उसका मैं आईटीसी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मुझे वो अगर मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से जितना टू बी में रिफ्लेक्ट होगा उतना ही मुझे आईटीसी मिलेगा। तो इमीडिएट नेक्स्ट कॉल मुझे क्या लेना है, मुझे मेरा सप्लायर को बोलना है कि भाई ये तेरा नेक्स्ट रिटर्न में तू मेरा सेल्स जो मेरा परचेस बिल है वो नहीं डाला है तो तू डाल दे। अगर वो नहीं डालता है तो आप उसका पेमेंट रोक सकते हैं। सो ये स्ट्रिंजेंट एक्शन आपको अपने एंड पे लेना पड़ेगा, ये अकाउंटेंट के भरोसे पे आप नहीं रह सकते। सिमिलरली अगर ये भी हमने देखा है कि आगे चल के टू बी के अंदर से अभी किसी ने एक ही एबीसी ट्रेडिंग कंपनी, एबीसी एंटरप्राइज है, अभी एबीसी मेरा ट्रेडिंग कंपनी है लेकिन एबीसी एंटरप्राइज का मेरा टिन डाल दिया, अभी मैंने परचेज ही नहीं किया है लेकिन टू बी के अंदर मुझे परचेजेस दिख रहा है। ये एक दूसरा जो वेट के अंदर हम लोग अभी भी हमारे पास इश्यूज आ रहा है, उसमें उसको बोलते हैं सप्रेशन ऑफ परचेजेस। यानी गवर्नमेंट ये बताना चाहती है कि आपने उसने सेल दिखाया है लेकिन आपने परचेजेस नहीं दिखाया है। तो वहां मेरी क्या ड्यूटी रहेगी कि इमीडिएट मुझे अगर वो टिन का नाम एड्रेस अभी आज मिलता है उसको बताना है कि ये तुमने गलती से मेरा टिन डाला है। एंड सेकंड कॉल इफ ही इज नॉट रेक्टिफाई इट हिज एंड सप्लायर, तो मुझे मैं आपको सबको प्रिकॉशनरी मेजर पे बोलता हूं कि मुझे एक लेटर इमीडिएटली स्टेटिंग दिस दोस फैक्ट कि ये सारे बिल जो मेरे टू बी में दिख रहा है उसका मैंने परचेजेस गुड्स और सर्विसेज अवेल नहीं किया है, ना उसका मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, ना मैं उसकी आईटीसी ले आया। तो ये आप अपने एंड पे तो अपना नोडल ऑफिसर को कम्युनिकेट कर देना है बाय वे ऑफ ईमेल या बाय ऑफ लेटर। हमारा नोडल हमको मालूम है, तो ये एक बहुत प्रिकॉशन लेना है। विद दिस आई नाउ वेलकम एनी क्वेश्चंस ऑन जीएसटी। चिंतन। Superb. So we have received a lot of questions, but I think let us welcome CA Rima and CA Khyati. And while they are introducing themselves, they can also post one question to any of the panelists. Let's start with CA Rima. CA Rima has been associated with Vasani and Company. So CA Rima ji, welcome to this particular webinar. And even Dr. Bharat Rima ji, you will have to unmute yourself.
from your side? Yeah. Thank you, Chintan. Hello. Am I audible? Yes, you are audible. Yes. Thank you, Chintan You bhai. can Thank you, introduce Vasani yourself sir. and post the question. Yes. Thank you, Chintan. Thank you, Vasani sir. And I'm thankful to Dahisar Sports Foundation and Rotary Club for giving this opportunity. I'm working since 12 years with Vasani and Company, and I'm also a partner in Vasani and Company. I've also given several lectures with Vasani sir at the Income Tax Department, as well as in various schools and in various study circle groups. Uh, and I have also prepared various budget presentations and any other presentations. And I'm very thankful to Vasani sir for giving this opportunity. Super. Rima, any questions particularly to our esteemed panelist? Yes, I have a few questions. Sir, regarding cryptocurrency, sir, how will you keep a ledger, or how will you keep a track of from where you have purchased, or what cost you have purchased, or if you have purchased in kind, like for another cryptocurrency, then how will you value the cost of acquisition? Superb. And Rima, before posting that question, I would like to know how much cryptocurrency do you currently own? No, nothing. I'm kidding. Let's go to CA Rajendra Bagade. Then we can go to Dr. Bharat Vasani and Dilip Bhai for his inputs. CA Rajendra Bagade. I think Bharat Bhai would be right person to answer, but then I would just say there is at government level, this particular question was being analyzed at a very high level committee, and they have not yet come out with their solution. So, but then the government wanted to tax it anyhow, so that's why they have introduced the budget provision. But then legality and other issues, that needs to be decided, and that high level committee, as yesterday our finance minister also said, that it will take time, and only after the findings of that committee or maybe the government resolution can give some answer. Oh. So this would be Superb. like standing on two footings. On one side, they are asking that they need to minimize the litigations. On the other side, they are not coming with a comprise section, a comprise way to calculate At the least they are cost. getting tax now. So it will increase. Should be happy. At least they are starting collecting the tax. But that doesn't legalize the cryptocurrency. As Bharat Bhai was also Yeah. saying, we don't have a regulator for the same. So you need to have a regulator like RBI. So that's why they introduced, or rather, they are going to introduce. RBI is going to introduce the new, our own digital currency. They are not going to call it cryptocurrency because anyway that name is not having a proper this thing. So basically, RBI, let's assume it will be well regulated by RBI, and we will have our own virtual digital currency. Yes. Superb. Is there anything to add, Dr. Bharat Vasani and Dilip Bhai? Answer to the Rima's query. Really, the hot topic, very burning issue since last 2-3 years, and very burning issue since last almost 36 hours after the announcement of the budget. जैसा मैंने बताया कि बिटकॉइन तो यार अभी तो रेगुलाइज हो गया, अभी तो बेच डालो 30% करके, एकदम परफेक्ट कर डालो, कोई टेंशन नहीं है. आप जितना भी एक दूसरे को फोन करने चालू कर दिया, અરે બિટકોઇન લાવો, બધું વેચી નાખ, કાંઈ વાંધો નથી. હવે તકલીફ છે ઇન્ડિયામાં છે ને, હવે બધું રેગ્યુલાઇઝ થઈ ગયું છે. નો રીમા, your question is really a perfect on the right time and the right place. Thing is that कि Bitcoin and the digital currency जो है, especially the same word used by the finance minister yesterday, Sitaraman ji, she never used the word Bitcoin or the cryptocurrency. You see the budget lecture, that is virtual digital asset. They have never used, Rajendra, the word cryptocurrency or Bitcoin. The reason is that why? Because that is not legal tender in India. That is the reason. एक ही इसमें एक ही आंसर है रीमा कि once it is not legal tender, उसके पर 30% भर के उसको रेगुलाइज करना,
देयर आर सो मेनी इश्यूज अवेलेबल. उसका एफएमवी कैसा लेना, उसका कॉस्ट कैसा लेना, कॉस्ट लेना तो इंडियन कॉस्ट लेना है या फॉरेन करेंसी में जो प्रिवेलिंग रेट लेना है वो लेना है. देयर आर सो मेनी अनसर्टेनिटी. 1% टीडीएस काटना है तो कौन काटेगा, उसका गवर्निंग बॉडी कौन है, उसका जो पर्टिकुलर मेंटेन होता है. जैसा आई टोल्ड कि आपका डीमेट अकाउंट होगा या डीमेट में कोई कंट्रोलिंग बॉडी होगा, जैसा सेबी कंट्रोलिंग बॉडी फॉर दी ऑल शेयर मार्केट एंड ऑल. सो ये सब चीज एवरीथिंग अनसर्टेनिटी. जैसे राजेंद्र सेड कि देयर शुड बी सम very intellectual people sit together and draft some very because ये क्या होता है, ये करेंसी जैसा मैंने बताया कि ये करेंसी एक दूसरे को देके इसको जैसा ऐसे ही ट्रांसफर करते हैं जस्ट लाइक कैश. तो कोई गवर्निंग एंड कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है एंड इट इज वेरी डेंजरस. फॉर्चुनेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तो बोल ही रहे इट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट. भले उनको उसको क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन करे जो भी है, but thing is that so much care should be taken to tax that particular thing and for the controlling that particular currency. Thank you. Thank you, Dr. Bharat Vasani. And yeah, Manish bhai. Bharat bhai, to add to this, I have one question into this only, bit related to cryptocurrency. So normally what happens when we have to transfer any funds outside India? So there is the paperwork with respect to RBI and as authorized dealer. Second, there's a cost involved towards the bank charges, which is very high. So at times people used to transfer through Bitcoin or any other cryptocurrency. Supposing I want to transfer something to USA for some children's education or something. So immediately at the click of button, I transfer to his US account, and from there it converts it to dollars and make the payment, which is a span of say half an hour's time. Now there is a TCS also. One is a valuation of the Bitcoin, that what will be the pricing. Second, if I am transferring any funds outside India, more than 7 lakhs rupees, then TCS is there. But when it comes to a cryptocurrency, the government has to a certain extent legalized the taxability, but usage of the cryptocurrency and the reporting part, that is supposing if I am having some Bitcoin in India, I purchase through India with the legal route, with the proper source, but that Bitcoin I'm transferring outside India. But there is, I think there are no reporting formats for that, and it won't be there in my demat holding statement also. So No, see, Manish, answer to this. You are saying I am transferring that particular in within half an hour. That transferring outside India Bitcoin from India to US, is it legal? Answer is no. It is legal. So there is nothing in FEMA which prohibits also. No. I am just answering to that particular one step further. See, what is the position of the person who is receiving out of India? सपोज उसको उसकी सोर्स दिखानी है जहां पर रिसीव कर रहे हैं. सपोज आप यहां से एजुकेशन के लिए, सन का एजुकेशन के लिए यहां से 4 करोड़ रुपए भेज दो. आप बोलेंगे मेरा 4 करोड़ यहां से निकल गया. वहां पर 4 करोड़ दिखाएंगे. दैट सन, हाउ द सन और चिल्ड्रन कैन शो दैट पर्टिकुलर फीस पेड टू पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. Is it legal? Answer is no. So you are transferring. My dear Manish, आप फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में या फेमा में जो भी है, एनी अमाउंट यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम इंडिया टू दैट पर्टिकुलर कंट्री, वो अलाउड है आपको. देयर आर सो मेनी प्रोविजंस अवेलेबल विद द आरबीआई. आप बोलेंगे मैं क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर दिया, यहां से मेरा काम खत्म हो गया. नो, रेगुलेटेड ही नहीं है. हाँ, वो ब्लॉक मतलब वो अलाउड भी नहीं है. यस, आई एग्री विद यू. आई एम कमिंग टू दैट ओनली. आप बोलेंगे मैं ट्रांसफर कर दिया, तो उसका सोर्स 68 में क्या करेंगे? हाउ यू विल प्रूव द होल्डिंग? सी, आप तो यू आर इनवाइटिंग न्यू प्रॉब्लम्स बाय ट्रांसफरिंग विद इन हाफ एन आवर. इट इज वेरी डेंजरस. आई एम टेलिंग यू. मेरे पास हर 4-5 दिन में एक लोग आते हैं, वसानी साहब हमारे पास ये क्रिप्टो है, हमें फ्लैट लेना है, हमें ये दिखाइए. सो आई सेड कुछ भी मत करो, क्रिप्टो को यहाँ पर हाथ लगाएंगे जैसा बड़ा ऐसा सांप को छू लिया ना, वैसा ही चीज है. तो एट प्रेजेंट ऑल्सो 30% आप भर के, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, डोंट पे 30% में मेरा काम हो गया. नहीं,
जब तक कोई रेगुलेशन नहीं बनता है इंडिया में फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, डोंट डील विथ दैट इज माय द एकदम अर्नेस्ट मेरी एडवाइस है आप सबको कि डील मत करो जब तक कोई रेगुलेशन नहीं बनती है. I think yes, Just कल I ये want to- शुरुआत हुई है. Maybe further regulations would be in preparation only with crypto के related. Secondly, see. just I want to add one thing that whether we have shown this cryptocurrency as a asset in our balance sheet, have you gone through any balance sheet? हमारे पास अभी तक कोई कंपनी की या इंडिविजुअल की बैलेंस शीट में हमको ये क्रिप्टो करेंसी की एज ए एसेट नहीं दिखाई दी. See, once you show all that asset, then you can transfer, no? Also, what is the cost you record it at? There is no FMV available. So, Now, but sir, मतलब अभी क्या होगा कि purchase supposing there is no legal exchange for the crypto, there is no legal authority for the crypto. Only there are no infrastructure also. Maybe by transferring to some Axis Bank account, we can buy it, but there is no contract note, or you can say legality is nothing towards the Bharat Bhai said section 68. Also, if you're looking at if foreign exchange जो easily trade होता है, उसका rate if you want to see, you can go online and check कि ये rate इसका है और वो all over the world same rate होगा. But crypto का you cannot decide like that. So how will you even book it in your books? What is the basis of the There is no valuation? pricing is not there. Also, No, FEMA, so you're saying it is not available in FEMA की ऐसे specifically बोला नहीं है कि करो मत. But FEMA में वो जो clause है कि 10,000 से ज़्यादा US dollars you cannot shift out of the country, वो तो इसमें फिर भी cover होता है. If you're saying 4 crores है तो इसमें भी cover हो जाएगा ना. So that too you are genuinely saying वो तो it's a clause, it's a blanket clause for everything, right? तो वो तो cover हो ही जाएगा. No, but I think इतना करने के बाद भी if the client is regulation should be there. इतना करने के बाद if the client is still dealing in crypto, it is always advisable कि उनको बोलो आपका records रखो, पैसा कहाँ से डाला, क्योंकि 10 साल तक तो केस खुल सकता है. आपका कभी भी नोटिस आएगा. You have to be prepared. And अगर foreign exchange है और 15 साल. हाँ. Foreign है तो नहीं, one thing Manish, आप बोल रहे हैं यहाँ हम लोग we are on the second day of the budget announced. It is budget proposals. See, it is not an act. What Rajendra was talking about. Any budget proposal is presented, that will go to Lok Sabha, then Rajya Sabha, then will go to the president and Senate and all. Then that will become an act. उसके बाद आप सोच सकते हैं कि जो भी है, जो भी करना है. As on today, everything is raw. You understand? आप कोई डिसीजन अभी ले ही नहीं सकते. हमारे पास 2 दिन से चालू है लोग. अरे भरत હું આમ કરી નાખું, આમ કરી ભાઈ શાંતિ રાખો, જય શ્રી કૃષ્ણ, કાંઈ કરવાનું નથી આપણે હમણાં. So this is the thing, people are really, जैसा अभी दीपक भाई ने भी सवाल पूछा कि अभी लीगल हो गया. There are so many issues where, in my opinion, by paying tax 30%, you have to prove the holding under section 68. जैसा दिलीप भाई ने बोला बैलेंस शीट में आपकी एसेट है तो इलीगल करेंसी की है. That particular currency is not as on date of that particular, as on today's date also, that currency is not the legal currency. It is not a legal tender. So I think the utmost care should be taken for dealing with particular cryptocurrency, in my opinion. Perfect. I think after budget the hashtag which was सबसे ज्यादा इंडिया में घूम रहा था वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में था. तो जैसे हमको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और क्लैरिटी आएगा, I would request the esteemed guest कि let's do a webinar again, but that time we will only concentrate on cryptocurrency because we can see a lot of people commenting, asking. So I think that should be the perfect thing. दिलीप भाई, बहुत लोगों ने कमेंट करके, स्पेशली दिलीप भाई, अपना दीपक भाई ने लिखा है कि जीएसटी इज गेटिंग ट्रांसपेरेंट डे बाय डे. इट्स गुड फॉर द बिजनेसमैन. And on GST, we have received one more question. GST credit balance transfer from to one registration to another registration. Is it possible? एक मिनट, सॉरी, आप म्यूट हो, प्लीज अनम्यूट करोगे दिलीप भाई? यस. वो जो अभी जैसे बताया गया कि इनपुट स्टेट आईएसडी जो है, यहाँ हेड ऑफिस है, ब्रांच है. तो जो जीएसटी बैलेंस जो राजेंद्र जी ने भी अपने को समझाया कि यहाँ जो बैलेंस मेरी पड़ी है, अभी वहां मुझे पेमेंट करनी है, तो वहां पैसा नहीं है,
So I can transfer this HO balance, credit balance to that registration, because it is the same pen, because my branch is also there in Gujarat and I am having a balance in Maharashtra. So I can transfer it very well. Superb. Thank you, Dilip bhai. Or also I have to introduce CA Khyati Vasani, who happens to be from Vasani and Company. And I have to mention, besides a lot of her clients, she has one very richest client, I can say, which is Meera Bhainder Municipal Corporation. So, Khyati Vasani, please give your inputs, and you can also talk about what you think the budget is, and if you have any questions for our esteemed speakers. Yeah, Khyati. Good evening, everybody. I'm CA Khyati Vasani. Talking about the budget, I would call it a new budget. It has come up with so many new introductions into the budget, like virtual digital asset has got some recognition into the law in India. I'm not saying it's legal. It's definitely not legal, but it now has some clarity as to how it's going to be taxed. Not on what level it's going to be taxed, but it's we know how it's going to be taxed in the future. Also, RBI is going to come up with their own digital rupee using the blockchain technology. I think we should wait for the RBI to come up with this digital rupee, so we'll know how the digital currency will be regulated in the future. And giving that RBI has been given the onus to do this, I feel that RBI will be the one in the future regulating the cryptocurrencies. They are going to use a drone technology into agriculture, which is a very cool thing. They are also pushing for defense and R&D within the company, within the country. So they want defense R&D to be there in the country. They're also pushing for production of defense arms within the country. So it's a very new budget with new ideas introduced. My question to Dr. Bharat Vasani would be that now we are supposed to prove the source of income. Till what, in case of say unsecured loans, what would be the source, and till what extent is the onus on the assessee to prove the source of the source? Yeah, very good question, Kathy. Source of the source is really a things that suppose I am taking loan from Dilip Bhai, and I have to prove the first. I have taken loan from Dilip Bhai. I have to file bank account of the Dilip Bhai, and also IT return and everything of the Dilip Bhai to prove that Dilip Bhai has given the loan to me. I have proved the credit worthiness, capacity, identity of that particular transaction under section 68. One more thing, the source of the source. It is my liability to prove. It is my obligation to prove that from where Dilip Bhai brought the money. From where Dilip Bhai bought the money. Or from Dilip Bhai का source क्या है? That is source of the source. Suppose 2 करोड़ मैंने दिलीप भाई से लिया, दिलीप भाई का सोर्स प्रॉपर है, बट दिलीप भाई ने सपोज इंटर्न राजेंद्र बगाड़े से लिया एंड राजेंद्र बगाड़े का सोर्स प्रूव नहीं हो रहा है, सो दिलीप भाई को प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम टेकिंग लोन फ्रॉम दिलीप भाई, माय सोर्स इज दिलीप भाई एंड सोर्स ऑफ दिलीप भाई इज राजेंद्र बगाड़े. So this is the Khyati full vicious circle. Source of the source that should be proved, and there may be in some other things also. See, they no stop. They will ask यार राजेंद्र बगाड़े का भी source prove करो. एक डिग्री तक नहीं जाना है आपको. They may go to 5 circuit also. See what happens now. Why they are going with this particular thing. Rajendra, you are going. There are so many cases of the that Praveen Jain, Bawarlal Jain, all penny stock issues are there. उसमें क्या हो रहा है? Everything is circuit trading. A B को सेल करता है, B C को करता है, C D को करता है, D A को करता है, and बाद में वापस जाके वो circular trading करके वो transaction दिखाते हैं, and that transactions are bogus. हमने ऐसा बहुत सारे केस पे देखे, रेड केस में देयर आर सो मेनी थिंग्स. द पर्सन डिपार्टमेंट calling them by issuing summons under section 131
तो सामने वाले का सोर्स हो ही नहीं सकता। वो बोले मैं तो पान वाला हूं, मेरी 25,000 की इनकम है। तो सोर्स ऑफ द सोर्स में आप सर्कुलर ट्रेडिंग में जाते हैं तो जो बेसिक सोर्स है वो सोर्स प्रूव ही नहीं होता है। तो हमें बहुत सारे जजमेंट 68 में है कि मुझे सोर्स ही प्रूव करना है, मेरा लायबिलिटी सोर्स ऑफ द सोर्स प्रूव नहीं करना है। इसमें डिपार्टमेंट बहुत सारे केस हार गए। सो टू कर्ब दैट पर्टिकुलर ब्लैक मनी, सोर्स ऑफ द सोर्स प्रोविजन यहाँ पर ला रहे। लेट अस होप दैट सोर्स ऑफ द सोर्स प्रोविजन विल बी passed in Lok Sabha and that will become an act. So it will be very difficult to prove source of the source for the transaction, like the one is the loans, second is the gift, third is the share capital, or any entry credited to your bank account. And that is source of the source you have to prove under section 68. Thank you, Kathy. Thank you. I have one more question for Dilip uncle and Rajendra sir. Sir, now that virtual digital asset has been introduced into the system, what will be the GST repercussions on it, or how will GST recognize it? Will it still be an asset, or जैसे या क्रिप्टो जैसे करेंसी रेगुलर में यूज होता है तो उसको अलग रिकॉग्निशन है इन जीएसटी, तो कौन सी साइड पे रहेगा ये जीएसटी में? Yeah. So can you hear me now? Okay. So what I mean to say, currency is not going to be a good on which GST is applicable. So currency is excluded. So that is what in definition section itself it is there. So if it is tomorrow, it comes as a legal currency after the high level committee or the finance ministry comes out with the clarification. Then thereafter, I think the GST would not be applicable on currency. Unlike the same is happening now. Where is How about facilitating the transaction? Like कोई बेच रहा है, कोई दे रहा है, अगर बीच में कोई there is someone facilitating the transaction. If it is a transaction of currency, then there should not be any GST on it. Okay. Like now it is happening. If you are doing any loan transaction, then there is no GST on that. Any kind of financial transaction. Even in case of the shares sale and purchase, securities sale and purchase. Yeah, but Dilip bhai, you can add to it. Yes, it's okay. No, once it's a currency, then it will be out of the purview of the GST. Correct. Thank you. Dilip bhai. Bharat Vasani, on mute. Yeah, Khyati Jindal, मैंने unmute कर. Yeah, you are unmute. You can speak. Yeah. Manu, or extended question to the Khyati's question, Dilip and Rajendra. Suppose, as on today's date, the person is holding cryptocurrency and उनके ऊपर रेड होती है आज की तारीख में, before passing that cryptocurrency legal after 1 April, 1st April, after passing the, I am talking about tomorrow. Suppose cryptocurrency जो होल्ड कर रहा है उनके पास रेड होती है और उनके पास 5 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी मिल रही है आज की तारीख में, बिटकॉइन. तो व्हाट विल द पोजीशन ऑफ द इनकम टैक्स? तो ठीक है, सब प्रॉब्लम्स है ही उनको, सोर्स प्रूव करना, ये सब इलीगल करेंसी, दैट ऑल. बट व्हाट ऑफ द जीएसटी ऑन दैट पर्टिकुलर बिटकॉइन फाउंड व्हिच इज नॉट लीगल करेंसी? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट? भरत भाई, आप ऐसे क्वेश्चन जो पूछ रहे हो उसका मेरे ख्याल से आज की तारीख में फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी आंसर नहीं है. So see, it should be covered under the definition of the goods. See, if they want to tax it, they have to get it into, because the goods definition is that every kind of movable property other than money and securities. So goods is defined. So if they want to tax it tomorrow, that particular transaction, then it should be considered as either goods or service, say exchange, services. Say differences they want to tax is under GST. So first they want to make it the transaction legalized. That how the once they want to tax that profit. So do you want to that it is to be considered as a sales and purchase of that transaction of the digital cryptocurrency? So if you depend under the goods, then it will be automatically covered under that GST, and then profit will be taxable. Not in today's अभी illegal currency है तो goods नहीं होगा वो? Sir, this is not a legal tender. They are also calling it an asset.
It is neither an asset, it is neither a security nor a legal tender nor money. So They're calling it a Taxable digital asset. digital asset. If you are holding anything, it should be come into your balance sheet. That is the first. So it is not, you are having a black money. Either you are disclosing your cash on hand in your balance sheet. No, it is with you only. It is just like Manish, that. It is a, you consider મનીષ it as a તારા black તારા money. પૈસા છે લીગલ છે કે નથી જવાબ આપો હવે ચલ. If you are holding, This is online. Yeah, sorry. no, again it will be come under treason. Yeah. Thank you, Dilip bhai. Yeah, Rajendra, please carry on. Yes. So unfortunately, we have exceeded our time, but I would want to take, as we do it every time, अपन एक final bite लेंगे सबसे कि what do they think about the budget in a very brief moment. So let me start with CA Manish Vora. Manish bhai, what is your final take, parting words for budget 2022? Chintan, the budget, I think it was simple, but it was very forward looking. And this budget, the government has outlet highest amount on capital investment, the results of which will be seen in maybe another few years and for many years also. So I will give the way government has not increased any taxes on the people of India, and at the same time they have deployed more money towards the capital expenditure. This budget should be given 7 or 8 out of 10. Superb. We can also do that rating. So 7 out of 10 from Manish Vora. Let me quickly go to Rotarian Chetan Joshi, who also happens to be a tax practitioner, a very dear friend of mine, representing Rotary Club. What do you think, Chetan bhai, Chetan Joshi? Your final parting words for the budget. Hello. 2022. Hello. Yes, Chetan bhai, please. Chetan bhai, we can hear you. A very dear friend of mine, representing Rotary Club. चेतन भाई, या यू आर ऑडिबल. जस्ट आपके फोन में अगर चालू हो ना, बिकॉज उसमें हमेशा 10 सेकेंड्स का लैग होता है, तो आपका फोन में वो बंद कर देना. ચિંતન, મને એવું લાગે છે કે હવે નાના માણસો માટે તો કઈ રહ્યું નથી, જેમ ભરતભાઈ કીધું ઓલરેડી કે એવું કઈ દેખાતું નથી. હવે જસ્ટ અમારે જોવાનું છે અમારા રોટરીમાં કેટલું ડોનેશન કોઈ આવે છે ને કેવી રીતના ક્રિપ્ટોથી આવે છે કે શેનાથી આવે છે. Super. So yeah, of course, people, I would appeal again, please join Rotary Club. He's representing Rotary Club और उन्होंने बहुत smartly एक चीज बोला कि I think if there is any donations, crypto is welcomed by a lot of associations. Thank you, Rotarian Chetan Joshi. Let me quickly go to CA Reema Shah. What does she think about the budget, and out of 10, how much will she rate? Yes, the FM started with a very good idea of Amrit Kal for 25 years in this Kalyug. And with that, she moved on to providing various project schemes of Gati Shakti, Drone Yojana, Vibrant Villagers, Digital Health and everything. She also increased the capital expenditure by 35.4%, a very good move by the government. But with it, there is also fiscal deficit. उसके बारे में कुछ नहीं बताया, कैसे वो complete करेंगे, we don't know. And moving ahead to the direct tax proposal, I would like to quote the Mahabharata Shanti Parva shlok which she told. King must make arrangement for Yoga Kshama, which is the welfare of the people, by abandoning, laxing state government approaches and collecting taxes which are in consonance with dharma. तो ये सुन के मुझे आई जस्ट रिमेम्बर अ टैक्स गुरु आर्टिकल रिसेंटली कि 1973 में देयर वाज अ टैक्स रेट ऑफ 97.75%. तो नो वंडर्स एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी था इंडिया में, ऑब्वियसली रहेगा, इतना टैक्स कौन भरेगा. बट वी हैव मूव्ड like as per the shlok, we have moved down towards 30% as of the highest tax rate today. So it's a good move. हम लोग काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं. एक बार सुनने में लगता है कि अरे इस बार स्लैब रेट में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, बट considering this COVID times, even UAE is planning to tax the corporates at 9%. तो we are still in a good position कि हमने बढ़ाया तो नहीं, एटलीस्ट चलो कम तो नहीं पर बढ़ाया नहीं. And yes, digital currency of course, we expected a very friendly approach, पर इसमें तो मैडम ने ऐसा बोल दिया कि हम झुकेंगे नहीं, 30% तो बढ़ना ही पड़ेगा.
और उसमें कॉस्ट का डेफिनेशन नहीं दिया, तो वो मिलेगा कि नहीं वो भी नहीं पता है. So with this overall thing, I think that the budget is big on hopes and short on ideas a bit. So I would rate the budget 6 out of 10. Thank you. Superb. Thank you, Rima. Let me quickly go to CA Khyati Vasani. Khyati, your inputs and the ratings for the budget. I don't think I'm qualified enough to be rating the budget, but yes, like everybody else said, there are good ideas, but I think they have left a lot of ambiguity when it comes to cryptocurrency, because everybody knew they're going to be waiting for cryptocurrencies. Like, it's trending on Twitter at the moment, but they don't actually know that what is in store for them in the future. Like, there's so much litigation that there has been going to be introduced into the system. So I hope Twitter doesn't start a WhatsApp university of its own and start selling cryptocurrency without keeping this in mind. So for that, but of course, like they said, a huge capital investment which the country needs at the moment to come out of the pandemic. Of course, deficit is going to be higher. So it's a good budget. It's a very safe budget. But I hope there was a little more clarity when it comes to cryptocurrency. Thank you, Khyati. Let me quickly go to Dilip Parekh ji. Sir, your inputs and ratings for the budget. How much do you think it gets out of 10, according to Dilip ji? I give this a 10 out of 8 out of 10, because from the direct tax point of view and from the indirect tax point of view, so far as GST is concerned, so government has already given a stringent message to the all person. Okay, if you now do anything wrong, we will not tolerate. And in the past also, we have seen that when many practitioners and even dealer, the practitioner who are abating in this billing business, tax invoice business, they have been taken into custody. So, and now proving the transaction wise, Deepak bhai, tax queries was there, whether it is they can do it, yes, because they have a power to verify the genuineness of the transaction. That is the main possibility. If the government do not receive the money, how they will give the money? So this is the main. So now, henceforth, there won't be any problem as such, and many changes in indirect taxes. So this is a welcome budget for the infrastructure of our country. Health up to you. Thanks. Thank you, Dilip bhai. And I also I did not mention that he also has presence in Dubai. उनके son भी आज ये देख रहे हैं. Dilip Parekh's son is right now practicing in Dubai, and it's a totally global firm. So congratulations, Dilip bhai, and we hope के और branches खुलती जाए. Let's now go to another international personality from Dahisar, who has multiple branches all across India and also all across abroad. CA Rajendra Bagade, your final parting words for the budget. का विकास और उसके साथ जुड़ गया है अभी सबका प्रयास. तो गवर्नमेंट वांट्स यू टू डू द योर ओन बिट. तो सबका प्रयास भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. आज हम लोग $3 ट्रिलियन इकोनॉमी के नीचे है, and we are number 5 like in the world GDP. So $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर करनी है तो सबका प्रयास करना पड़ेगा, एंड उसके लिए सबको एफर्ट डालने पड़ेंगे. माइक्रो लेवल पे चेंजेस होते रहेंगे, बट ओवरऑल जो गवर्नमेंट कर रही है, तो इट वाज अ कमेंडेबल बजट. गवर्नमेंट ट्राइंग इट्स बेस्ट टू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट, एंड आई थिंक वी शुड सपोर्ट दैट, being tax practitioner, being good citizen, and being the taxpayer community. So I'm always positive about it. Instead of rating it, I would say it was a very good budget. I give a thumbs up to it. Thank you. Thank you, Rajendra Bagade, and I can certainly see a Rajya Sabha MP in the future. You didn't rate it, but you said it is a good budget. So we take it. Let me quickly go to Dr. Bharat Vasani. His inputs about the budget. Yes, Dr. Bharat Vasani. See, I'll come to that first that Rima has covered that in this budget, government has given 35.4% for the capital expenditure, and
तुरंत मार्केट बूम हो गया. There are so many implication of that particular capital expenditure, because expenditure आप करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. देयर विल बी आपके जो भी गुड्स ट्रांजैक्शन हो गए, ट्रांसपोर्टर होगा, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्री विल बी इमीडिएटली ये हो जाएगा, रोल ऑन हो जाएंगे. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दे हैव डन इट कि 35.4% वहां पर 7.5 लाख करोड़ they just put for the capital expenditure, and in 19 years इतने कभी नहीं हुए थे. 2019 में 3 लाख करोड़ थे. Now it is in exactly after 4 years it is 7.5 lakhs crores. So definitely it is good thing, good move after the COVID-19 done by the department. One more thing good we were expecting all over the country, taxpayer का जो problem है, there are so many chartered accountants sitting here. The problem of 148 of the old regime, हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओल्ड रिजीम जो है उसको अमेंड करके उसको लीगल कर देंगे. जो भी है 148A को जो करेंगे, 148 को बहुत बार एक्सटेंड करके वो जो इलीगल था. देयर आर सो मेनी हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री हैव प्रूव्ड दैट कि 148 of the old regime reopened before after 1/4/2021 is illegal. There are so many issues going on. There are so many writ petitions are pending, and so many expensive job for the taxpayer of the country. So fortunately we were expecting कि यार वो 148 को लीगल करके 148 भी रखेंगे और ये सब होगा. तो आई थिंक वो नहीं करना वो भी सबसे बड़ी बात है. So good thing department has not done that is that 148 is not amended retrospectively again. So this thing, and जैसा one more thing कि लोग बोलते कि यार मेरा टैक्स को कोई चेंज नहीं किया, मेरा स्लैब रेट पे कुछ नहीं किया. तो आफ्टर दी कोविड जो एक्सपेंसेस वगैरह है तो आई थिंक नहीं किया या एक्स्ट्रा नहीं दिया वो भी एक बहुत बड़ी बात है. सो आई थिंक इन माय ओपिनियन दिस इज रियली अ गुड बजट, and I'll give 8 out of 10 of this particular budget. Thank you, Chintan. Thank you, Dr. Bharat Vasani. And one very interesting comment which I think वो sum up करता है, खर्चा करो तो कमाई होगी, और कमाई होगी तो आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हो उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो. वो आपको टैक्स बचाने के लिए हेल्प करेंगे और बहुत पैसे हो जाएंगे. तो प्लीज मेरे पास आओ तो हम लोग अच्छी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे. थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु जॉइंड अस. Thank you, Dilip Bhai. Thank you, Dr. Bharat Vasani. Thank you, CA Rajendra Bagade ji. CA Manish Vora with Dahisar CA-CPE Study Circle. Thank you for joining. Thank you, Rotary of Mumbai Dahisar ke representative, Rotarian Chetan Joshi, and my very dear friend. I would also like to mention Rajendra Bagade's team at SARC who helped him get everything sorted. Thank you to our team, because एक बंदा अकेला नहीं कर सकता. And I can see Rajendra, yes, sir, उनका नाम क्या है जो आपके साथ है? ये हमारी निक्की गाला है जो she is with me for last 10 years. She is also CA. Superb. Thank you, CA Nikki, for helping and making this amazing presentation possible. Thank you, Dr. Bharat Vasani, your team at BD Vasani and Company and Vasani and Company, CA Rima Shah, CA Khyati Vasani, and last but not the least to all the audience जो आज हमें जुड़ी है from all over from different organization. ये वीडियो यहाँ पे ही रहेगा, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो. एंड टू मेक दिस इवेंट अ सक्सेस आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो. यस, हमने बहुत सारे मैसेजेस आए क्रिप्टो करेंसी को लेकर, सो वी विल ट्राई टू कम अप विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू डू विद क्रिप्टो करेंसी. Secondly, at 9 p.m. today, we have an international webinar on budget where we have Dr. Bharat Vasani and CA Janak Vagani. It is organized by Shri Lohana Mahaparishad, which is a representation of 35 lakh Lohanas from all around the world. And that particular event would also have a few panelists from different industry. We have from automobile industry, we have a real estate tycoon, we have a African billionaire, we have one social entrepreneur from London. So I would request everyone, if time permits, it's at 9 p.m. So आप उसमें भी join कर सकते हो.
Bye again from everyone today who have joined us here, and we hope to see you very, very soon. You have been with us for 2 hours and 9 minutes 41 seconds counting. Thank you so much. And we have to catch up very, very, very soon. Abhi tak corona hai, so please mask up and please take care of your health. Thank you so much. We all